Chill. We're good. Ay, ¿por qué eres así de tenebrosa? ठीक है स्पेनिश भी बोल रहे तो स्पेनिश होगा Soy yo. पता नहीं Adoro tu cabello. Oh yeah? Thanks. Yeah, it felt like a vibe, you know. I kind of liked it. I mean, it was super green when it first went in. Like my mom was freaking out. एक तो मेरी चैट कितनी चली गई है I swear the Dez, they just keep outdoing themselves. Achilles, he looks so cool. He does, and I just can't wait to see how it's पता नहीं था actually इसमें played. न्यू You're just हॉबी running around आना है playing Pikmin in Valorant. You got these little minions that can do things for you. I'm excited to see what the abilities are actually going to look like. Yeah, his friends look so cool. मैच स्टार्ट हो गया Is awesome. I'm just so excited to see how it works. Maybe Reina. लाइव back in the करते middle, हैं yeah? पहले करना चाहिए बाद में करना You चाहिए guys mentioned कर the दिया abilities, start है so for a closer look लाइक at करो Gecko सी में and what he जाके actually brings to the game, let's hear from Ryan Coulthard, Asian gameplay designer on the Valorant मैं तो character. KFC भी मंगा लिया कैसा Hello everybody, yeah, Brennan TAYYAB Sykes RAZA. here, joined with a very exclusive interview of Ryan Coulthard, the game designer behind the new agent Gecko that's due to be released pretty soon. And yeah, thank you very much for joining us, Ryan. You know, I know you've just flown in recently straight into Brazil, so yeah, thank you for your time. Yeah, no, I'm stoked to be here. It's like I've always wanted to do some of the stuff with you guys, so it's cool to be on here. Well, let's talk about the abilities. The first one I think that we want to talk about is Mosh Pit, right? Yeah, Mosh Pit. This ability, you know, heavy clearance. It looks really quite powerful as well. Similarities to KO's Fragment, बाइक कौन सी but गई it's है going to be more of an approachable, like it's going to be a very nice zone that it covers. It gives you a lot of time to kind of run out of it and a lot of time to react, but it is going to kind of उसकी abilities दिखा रहे and so it does crazy damage too, right? It does, yeah. ये So दूसरा it's वाइपर है similar to like Breach's Fusion Blast, so if you don't get out of it, you know, ठीक हो गया it's deadly in the center. So. कंट्रोलर The ability, है that is नेक्स्ट the only ability that you can't go and pick back up again as well. Well, Mosh is still trying to figure it out. Okay. The other ones, you know, they're a little more grown. He's just a little baby trying to figure it out. Right. Okay, I see. Mosh, you know, it's for all, you know. बाल देख तो भी ऐसा हेयर स्टाइल बना Not the signature Pink ability. रखे हुए of के Gecko. shade In पर fact, that's a different ability, right? That's पिंक ही Yeah, that's right. So the signature that we have, kind of the bread and butter, the initiator tool, is going to be Dizzy. So Dizzy is what you're using kind of round to round. It's more of like a versatile tool to be able to clear like mid, some short, पहला है जो long range नया angles to compete जो with some ऐसी of our जो other बिल्डिंग है initiators. उसके साथ But बिकॉज यू it भी है उसके definitely बाद has a lot पता of different ways to देखना kind भी of आएगा counterplay and different ways to kind of change how you take spaces compared to some of the other initiators. And it is kind of similar to some other abilities in that it blinds your opponent, Chat but it क्यों works दिखा in रहे quite हो? a different way, right? Right, yeah, we wanted to try sorry, my something that bad, was yeah. a little less, like it kind of obfuscates your screen a little bit less, gives you a little easier of a time to kind of maneuver around. और वो stun हो But it जाएगा also has a lot of like downsides and a lot of trade-offs to, like it can kind of get shot and mitigate a lot of the area there. But the idea there was kind of creating like, हेलो a breaking tool that's a little more गेमर वेलकम टू approachable, द स्ट्रीम क्या हाल है जो for, वॉच like, पार्टी you know, देखो all फाइनल players. चल रहा है But talk to me a bit more about, so you're an opponent, there's a Dizzy coming towards you, Right. you shoot the Dizzy, it's now on the floor, and the gameplay loop Nice, is yaar. kind of that the Gecko can go and ये तो retrieve दूसरा that फेड है for फेड से भी आगे another मिलती है Dizzy in like 10 seconds time. Right. Do you see a दस lot of the इसको gameplay बैक भी loop ले around, सकते हो like, आप fighting for सेकंड those बाद फिर दोबारा आ abilities, जाएगा almost like people fight around alt orbs now? Yeah, so it's in a similar way that you can kind of like play around a lot of Killjoy's utility, where you hear the turret, then this strategy comes in. It's like, okay, so now we hear the turret. What do we do next? Same thing with Dizzy. Once the reclaim or once the globule is created, there's a couple seconds there where you really have to fight for it. It becomes like a mini objective, similar to some of the ultimate orbs that you see. Yeah. कब आएगा and so ये 2 दिन बाद आ figured, जाएगा बीटीवी भाई शायद creating a ये power नया space आने and वाला है kind ना of creeping your way forward and trying this new style of or this new pacing. पैक of भी आने वाली initiator का play was gonna be 20000 interesting, रुपया so स्पॉन्सर करो यार पैक find ले out if it is. Okay, so my favorite ability that we played so far एक मिनट has आपकी to आवाज be नहीं जा रही the है wingman, right? Because आ रही है we played it. Running. He is running, he is sprinting, but that is such a Oh, unique yeah. ability as well. ये मेरी तो बफर हो रही है देखो यार जो Well, स्ट्रीम in पर आ terms रहा of स्ट्रीम the को way it लाइक कर plays देना out, 2 very लाइक हो similar to गया some others in terms 3 of मैंने movement देख and जो everything एक else, किसी but ने yeah, किया I'll let जितने you take it away. Yeah, absolutely. So जितने स्पॉन्सर Wingman चाहिए is तुम kind बताओ of your तुम्हारे friend that helps you clear these क्या बात spaces. करते There's हैं gonna be like स्पॉन्सर भी आ रहे close, हैं mid मेरे range, Wingman. runs forward, parkours all over the place. ये देखो As soon as it sees an enemy, it'll jump up and then kind of like. ओ नाइस यार ये बंदे के पास जाते हैं और तो जाके रिवील कर देते हैं और बंदे स्टन भी हो गए शायद Area that it
effects, and anyone in that Zollam ability यार ये तो But that's not the only thing that's special about Wingman, Easy right? कर Because दे. there is a very unique Easy. feature. You guys Entry really के लिए pushing तो the बहुत envelope प्यारा है of यार the agent game. है. It's developed with the Easy mechanics, and entry that's के Wingman, दे who's देता है. got like this ult ये fire, right? Sentinel है शायद. Yeah. So one of the things we wanted to try, you know, Yeah, and the initiative whole है, theme of देखो. like power and numbers kind of thing, we wanted to इसकी ult क्या है? Wingman to also kind of वो बस spike भी लेके चला गया है. and also run with it. वो plant भी कर रहा है. itself, you know, so ये as result हो you गया find the spike, you can be covering it. भाई मेन काम ही हो गया यहाँ से और क्या चाहिए आपको? If you're kind of in these 1v1s, these one. वो डिफ्यूज भी कर सकते हैं. Then वो देखो. Defuse the spike as well, and you can cover. यार it और as क्या opposed चाहिए to, इससे? you know, someone having to cover you. It's a really unique interaction, but दो also बंदा बंदे का अकेला काम हो गया. बंदा यार बंदा अकेला हो उसको डिफ्यूज कराया खुद he just इजी. abandons it in enemy territory, right? Yeah, So yeah. you do have to be a bit careful. in पहला terms of एजेंट how है you वैसे जो यार स्पाइक के साथ Final खेल ability, सकता है the भाई. ultimate that we want to talk about, which is the the big one. अब आ honestly, रही है the big one. ultimate. Quite scary to see it run at you in the server as well. Yeah, that's Thrash. Yeah. So Thrash is Gecko's ultimate. You equip. Yeah, Thrash, Thrash it's cool, is but a the lot of ultimate. fish swimming around. Once you cast it, you possess Thrash. Thrash swims around and clears space pretty rapidly, as you guys are sure have seen. Once you explode or Nice. once you ये lunge, सीधा you बंदों के explode पास onto ही an जाता है enemy. या There's a control big करना radius पड़ता है. that is detained. So any player caught is detained. ओए मुझे तो लग रहा होए. है it control looks करना पड़ता है. really fun to play, and I'm just looking ये तो forward बहुत to जालिम seeing एजेंट आ some of गया the यार. content creators play it here in Sao Paulo, seeing people. ये get जो their hands on स्पाइक it, प्लांट it's करने और must be डिफ्यूज fun. वाला है वो तो भाई Yeah, it's बहुत gonna be a मजे का blast. कि I think there's only like so much we can do ourselves, and kind of like, you know, when we're playing, there's only so much we can see. Yeah. And so as soon as it hits live, and as soon as like the content creators really get their hands on it, we're gonna see some pretty cool videos, I think. Yeah. Well, I mean, I think that's going to do it for the interview as well. Thank you very much. Oh, Ryan. awesome. Yeah, मुझे लग रहा है 3 पोकेमोन डाल दिए Thanks for उन्होंने. the time. Hope you enjoy Sao Paulo. Hope you enjoy the games as well. तीनों पोकेमोन जैसे ही All है. right, we'll send it back. 4 बल्कि. चल. Thank you very much, Brent, Saisho, and Ryan. Mimi, I can't wait to play him. What did you make of his abilities? It's going to be so cool. I feel like there's so much potential that you can do with all of them, especially the mechanic of being able to recover your friends after using it. It's so unique compared to the other agents. ये we मेरे have को in the game. पॉपकॉर्न भी पड़े हैं पता. Diffuse spikes and everything. It's crazy. It's Crazy. nuts. हो गए? You could send out this little guy and just have them help out. मीठे पॉपकॉर्न पड़े हैं लेकिन ये नहीं मीठे आ रहा. हैं. It's gonna hand the pros. We क्या do हुआ? have मीठे friends मुझे in नहीं Valorant, पसंद. guys. Finally. आइसक्रीम Well, खाई let's थी put this तो to the audience. ये I'm नहीं गला gonna खराब let हो the गया. home think. Which of Gecko's abilities are you most excited to see? For me, it is Wingman. Crazy hands Wingman. down. Make sure you Trash use is the QR code ulta. to scan it and cast your vote now, and we'll reveal the result in a little bit. And ये also QR make code sure है. to use the hashtags VCT Lockin सही. and VCT. So we क्या can जो use stream this पर on आ रहा है tweets stream on को the लाइक कर broadcast, देना साथ and, साथ. मेरे ख्याल से वो so ability we दिखा wanna देगा hear कि it. QR code को. I'm gonna rig the vote towards Wingman. I'm not gonna. I I don't don't know what think you you guys need think. to. He's adorable. Yeah, I think I'd have to vote for Dizzy. Having यार picked ट्वीट up पे the बैक भी नहीं scouting होती. मैंने उसका utility, ट्रेलर the भी नहीं bucket, देखा it's पूरा gonna be पता है. really cool. Yeah, it's gonna be really cool indeed. But YouTube now पे we've आ met गया होगा Gecko, शायद. let's see him in action in the Would show love to. match. in a little bit, Dream is- because I know the teams are definitely gonna play him. And speaking of the show match, let's check out the rosters of these squads. Let's start with Team Tariq. Of course, Tariq was one नहीं of आया the अभी. best in his game before. ओए आया आया He आया won a आया. lot of, ये तारिक की tournaments टीम है. and trophies. It's been a while. ओए ये since तो we've बाहर seen हो him गया था compete on पिछले stage. में इनके So साथ this खेल रहा. team, नाइस. they have two. No, मिमी three if you count ये Tariq, G2 world की है Yeah, शायद. there is quite a lot of experienced players on this roster, especially with Mimi, who just won Game Changers champion. Cena, इनका of show course, now match करा competing रहे with वैसे. Navi, some big पता players नहीं अब there. एक कराएंगे कितना Tariq कराएंगे leading तो the बहुत charge. लंबा हो And then जाएगा. a पता couple लगे content 3 इनके creators मैच as जो well, 3 who होंगे. they themselves are pretty high एक ranked कराएंगे because they're शायद. a मुझे little लग रहा है bit शो regular. मैच है ना एक Well, they're होगा. going to be going up against Team FRT. They were FRT kind of पे bantering कौन है? back and forth already, Seth, between Yeah. Tariq and वैसे FRT. भी But फाइनल this है तो roster is थोड़ा also इसको incredibly ओ सस्पेंस एस के में रूसी डालेंगे. डाला उन्होंने. Just look at some of the big names that you have here as far as SK the Rossi भी VCT खेल रहा है. pros. You've got SK Nice. Rossi, you've got Pankana, दिख नहीं रहा तेरा you've got कैमरा ज़्यादा Sumitsu. बड़ा है. There's so much ओए कैमरे को firepower उधर ले जाओ. on this squad that या छोटा I have करो. to be ऊपर a little करो bit उसको. concerned for ऊपर Team करके Tariq. छोटा While कर they दो. do have all of those champions, there's a hell of a lot of talent. यार in बल्कि Yeah, back मुझे when Tariq was राइट pro, पे ले FRT जाना was चाहिए a क्योंकि pro उस as पे फिर well, मैप so शेप both of वगैरह आ these जाता है ना. rosters super stacked. It's going to be so exciting to कोई watch. इधर ले Who do you जाते हैं. guys think is going to take it? Who are you favoring? दोनों को I would सिलेक्ट favor Team करना है ना. FRT. फ्रेम I'm को. going for FRT as well. They got SK Rossi, especially if he's Oh, playing मैं duelist. आपकी Oh तरह boy, we didn't अकलमंद get to नहीं see हूँ it in his match. I'm hoping it वो happens तो here तू in the show नहीं है. match. I definitely want to see it. Now we've got a brand new agent and two absolutely clouted teams ready to play, and some world champions हो as जा. well. So let's not waste any more time चलो. and welcome अब ठीक है. Team Tariq and Team एक तो ये मेरी बफर हो रही है यार.
यार यार रुको तब तक FRT इसका ट्रेलर message. देखते हैं तब तक स्टार्ट होना बाकी टीम की एंट्री होने लगी है यार
ये भी सही है यार, वो सारे जो बाहर हो गए उनमें से एक एक प्लेयर की टीम बना के उन्होंने एक शो मैच में दिखा दिया। 2 बच्चियां भी ले लिए तारिक ने उसमें, एक G2 की एक दूसरी। इसमें तो मुझे लग रहा है तारिक की टीम जीतेगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखो किसी को भी कम नहीं है इसमें, ये सारे बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। इंडिया का भी एक आ गया, देख लो ये भी सही है यार। मिमी लास्ट टाइम ये गर्ल्स में जो गेम चेंजर हुआ था ये टीम जीती थी शायद, अब याद नहीं है। मिमी यही जीते थे, मिमी G2 मैरी। मिमी को देखो कितनी प्यारी है यार देखो, तारीफ करनी चाहिए। किसी और की नहीं किया आपने क्या है ना, तो मैं यार इन्होंने मैं बुलाया था, मैं गया ही नहीं, मैं टाइम नहीं था बेटे भाई। वो चैंपियन वेंडल लेके आया मैं वो यार। तारिक ये किला है, अच्छा लीडर्स अकेले आए हैं, सही। ये आके डफन हो गए इनके तो। हमने मेन लाउड और फिनेटिक का मैच देखना है, ये तो चलो। This is going to be the show match to end all show matches. We don't just have clout on both teams. तो मुझे तो था ये जब टीम हारती है बाहर हो जाती है, वो रोसी भी इधर है, सिम भी इधर, सिमट भी इधर है। Yeah, I'm really excited to see what these उनका रख लिया teams वैसे। have up with Gekko, being able मैं to तो अच्छा see सीधा एयरपोर्ट जाती है, सीधा reveal घर। there, they have some kind of combination, some kind of strategy. वो देखो लाउड क्या है, इसके मुंह पे कुत्ता बनाया It's all भाई going to be यार। about who has the best initial grasp, because these guys have not had that much time to really get their minds wrapped around it. He's got a very different kit compared to every other agent in Valorant, so it's not like you could just very easily swap over to this and fall into it. So I'm curious to see who has the best read on how to pilot this new agent. I believe they've had a little bit of time as well with their teams to kind of practice what's happening, and it looks like the map we're going to be playing on is Lotus. Mimi, there's going to be some techie stuff. Lotus खेल रहे हैं, Yeah, सही। initial thoughts on this one. On that defensive side, you have a lot of long control on both extremities, where I think that Gekko नए is agent really देंगे? really नहीं useful. देंगे। You send one of your friends down. अभी to वो scout आया ही early नहीं on. था ना Like, you उसमें। can just like have a wingman run down, stun someone on the No. defense. There's so much potential here. I mean, we saw that Lotus a couple times in the highlights there of his abilities, so yeah, I think there's going to be plenty of applications for it as we get into the Prime Gaming agent select. इसके बाद से जेट खेल रहा है, चलो इधर तो जेट खेल रहा है। Ready to go against one another. Obviously, I want to see Rossi on that jet. We see a highlight, but on अरे Lotus, wouldn't be shocked. तारिक न्यू प्लेयर खेल रहा है, एक एक न्यू प्लेयर भी खेल रहे हैं। Okay, we're getting silly. जो लीडर थे ना वो न्यू प्लेयर खेल रहे हैं, जो नया आया है एजेंट, As well as Gekko could be a really जो insane दोनों के combination. वो है ना लीडर या They're IGL doing it. जिनकी टीम है, वो नए न्यू प्लेयर खेल रहे हैं जो Yeah, है। it does look like it, and we're going to get Cino versus Rossi on the jet. This is a cataclysmic clash of jet players that I cannot wait to see. Jet different, This हमने देखा। alongside Gekko, piloted by both of these team captains, should make for an excellent show match. I can't wait to see this and see what's going to unfold and introduce you guys to your casters for today. Doug and Bala are joined by Ryan to take you guys through Lotus. Hey guys, I'm Ryan. You may not know who I am, or I don't look familiar, but I want to talk to you about my guests. I got Doug. I got the guest casters here. I got Bala. How you guys doing, man? Good, man. I'm glad we're your guests. Thank you for inviting us. Thank you for letting us join you on this desk. The best of the best only for the release. You know what I'm saying? It looks कितने so टैटू sick बनाए already. यार We got हाथ the पे। crowd involved, and they're hyped for both sides. I can't wait to see this because they ऐसा were, बहुत- I mean, just seeing the reactions on their faces while we were watching the trailer, it must feel really special for you and your team Brazil to में हो see रहा है। actually it get revealed today. Yeah, absolutely. So it was like a whole number of people. It's like the biggest effort I think we've had on the Valorant side. जल्दी कराओ यार, ये मैच हमने फाइनल It's देखना like है। a huge team effort to just kind of see all this stuff. And yeah, there we go. Let's get into this. And you know, the funny thing is too, is when you think of a new agent, people often, even us, who kind of have an inside view of things, have no idea how much goes into something like this. Right.
And I'm right away excited to see how these guys use wingman. नए I mean, agent की that's देखनी है what the best is abilities. talking about, but like, can they get plants down? कैसे Can they use करते actually हैं? make this thing work? They're ये gonna go for it फेंका right off the उसने. bat, I think. That's the ये wrong plant zone. वाला. There's wingman coming out. Honestly, लेकिन एक ये भी मसला है अगर वो मर गया प्लांट गिर जाएगा योर व्यू से ये ओ वो देखा प्लांट गिर गया यही मसला है बस उन्हें दिमाग अच्छा लगा उसके ऊपर शील्ड लगाई उसको प्लांट करने भेज दिया लेकिन मर गया देखो अब इतनी सारी होंगी तो कुछ कमजोरी भी तो होगी ना तो जाहिर सी बात है वो जाके प्लांट कर रहा है पीछे मैच कर रहा जाता है डिफेंड ही करना उन्होंने प्लस स्ट्राइक को Yeah, I just love that they go for it right away. Looks like there might be a little bit more tweaking to their strategy right इसको now. नर्फ कर देंगे आगे जाके कुछ देंगे I want to see him succeed, though. I'm going to be really disappointed if he just dies every round. Oh, No, I think they're gonna. Okay. See they're going through as well. सीरिया It's 3v2 right now. They're trying to recover it, but once that spike is down, you see the danger. You see how it's not ओ just उसने okay, नया पैक भी go आया है plant, वो go देखो नहीं plant, नाइफ लिया and you बस get a ने free यार round win. There's ये a इनको danger पहले ही to दे it. दिया सब कुछ सही है भाई I know you mentioned this somewhat in the interview previously. ये इन्होंने ये प्रमोशन के लिए मैच रखा चीजों की है ना वो न्यू स्किन न्यू एजेंट Wingman dies, and then I saw a little blob sitting out on the site. What is that? What do you do with that? Do you interact with it? How does this work? Yeah, so when Dizzy, Wingman, or Thrash, they die, shot, or time out, they'll turn into this little globule, like a dormant version of themselves. What a good word. Globule. I had to practice that one. And yeah, so they can reclaim it, you grab it, you got 10 seconds, and you can cast it again. ये बहुत मुश्किल हो So जाता you're है really interested ये in बैंडल आई नहीं आनी है trying to farm 3 that दिन as बाद much as 4 you दिन can, बाद surely. Yeah, absolutely. I think what we're going to see on Gecko is a lot of different pacing, like I was kind of mentioning earlier. Yeah. There's going to be a lot of stuff. You see where the defaults become stronger, or, you know, working with your team to get those reclaims, the longer you can last, the stronger you're going to be. And you saw actually FRT there try to use Dizzy to clear some space out of A main. And ये it इसकी didn't quite work फर्स्ट out. एबिलिटी है Speaking of Dizzy, Here he goes again. So what is Oh. he doing right there? Is it scanning? What's going on? Because there's a noise going on at the same time. Yeah, so as soon as Dizzy comes out, इसने बड़ा तंग करना है यार इस these एजेंट ने तो little like energy, radiant tentacles come out, start scanning. As soon as it sees an enemy in line of sight, it will fire off a plasma blast. So there's a बहुत recon तंग कर element to देगा it. Sure. That's really strong, it feels like. Maybe. इको था इको that is really strong. Mimi's really strong too. Let me ask you this. I also just saw as Dizzy was sent. किसको out स्पॉट of कर the रहे हो this side, टीआरटी या he एफआरटी bounced off the wall. मैं तो टीआरटी को Is कर there- So there is some of that to it, right? You can bounce it off the wall to get cheeky angles. क्योंकि उसमें टैरी का इसलिए तो उसको सपोर्ट कर रहा So दो बच्चियां भी हैं able to get shot, 20 दो HP, बच्चियां भी हैं almost any gun one shots. I think है मैं everyone तो one-shots मिमी it. को कर रहा So you हूँ kind of want तो to वो उसी में है you know, like you want to खुद try देखो different मैं techniques सीन of करी मैं throwing मिमी it, को either करूँ like सही out wide or off a wall and just kind of like a pop. वो जो लाउड वाले or, you know, फेनेटिक वाले वो बेचारे it's देख like रहे a कब आएगा high-risk यार kind of मैच reward. The farther you throw it, you know, the better. सही the coverage. पोकेमोन वाले उन्होंने वो बनाए हुए हैं There we go. Look at him go. Oh, I don't think there's a flash that went out there. Yo, that play. Oh, he's coming back. नाइस They just traded both of the Dizzies. उधर ही रह I wanna जाता see वो Yes, what it looks Mimi, like you when can get do it. globuled. When you get globuled. Show me the POV of that. वो आ रही है साइड के ऊपर से That was insane. Sir Mata और did rotate कर the जाएंगे, सी Omen चल TP जाएगा। सी as भी खाली है, Dizzy बी was भी खाली going. है। मिमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसको मैं इसकी And he स्ट्रीमिंग actually avoided देखता होता Dizzy हूँ entirely. सही। The enemy's Dizzy. और ये नाइफ yeah. भी आ रहा है यार कटाना Yeah, we're gonna start naming these Dizzies. Dizzy 1, Dizzy 2 or something. Attack side Dizzy. Defense side Dizzy. I'm getting Dizzy. फुल तांजीरो वाली स्क्वाड Unfortunately, में स्क्वाड में नहीं है no Gecko action for the rest of this round. दोनों आ गए But FRT do need it. They need a round here. ओह नाइस You don't want to get blown out in your first show match ever. Mimi's still alive. ये मिमी को उसने उधर देखा ही नहीं वो निकल गया Show match. वन मैन आर्मी उसने उधर चेक ही नहीं किया Stack these rosters are. Ooh, उसने सबने वही नाइफ लगाए हुए हैं सबने वो निया लगाई हुई है they're too good, man. They're too good, and I don't think you can with the crowd Nice. like this. See that? ऊपर है Oh. ना He's so weak. Two. कोई Oh, बात gotta- नहीं ओए अच्छा है he's got the cash. ये भी मैच अच्छा जाएगा यार कोई नहीं बोनस था उनका They needed a round, and there you go. मिमी ने खुद ही दिया उनको All because of the सही trade all the way back. आपको in फोन AA. करके बताया
हाँ ये देखो I इंस्टाग्राम know that बात this हो is रही supposed to be about Gecko, but I also just saw the Oni. है. तू तो jealous ही हो जा बस. There it is. And मैं that's क्यों just jealous so हो रहा? freaking sick, man. वो हो रहा है. Right now from this desk. I need the katana. Yeah, that the team worked really hard on यार ये that. 4 दिन बाद नई फाइनल नाइफ लेके दो. ओ की शर्ट पे देखो वो वैलोरेंट वाले स्टिकर्स बने हैं वो पेंगुइन के वो. They spent so much time and love on that thing, and you see One it here, miss. you know. अब तूने ये शर्ट भी लेनी है. I also Oh, realized we no, just trolled the नहीं ले ले. viewers at home. They नहीं, didn't नहीं. get to see the katana just then the way we ले ले. did. Unlucky. Trust us, there it is. It's sick. Of course, Tarek jumps on the opportunity. सही. So they can reclaim that now. And Right. You can actually see a little red dot on the mini-map as well, where that is. Yeah, so one of the strengths of Dizzy ये is, you know, taking some of ऐसे that चले staging जाता है ground. बैठा रहता है. You have your other initiators like Breached using Concuss or Flashes, and those don't regenerate. Yeah. Right. You're able to take these staging spaces and kind of have plays like this. ये where you बंदा can grab हंटर. So I just saw it had a 10-second cooldown. Wingman just ran in to clear Nice. space for SK Rossi right there. Loop, 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 loop. Nice. Here we go. Op's still in the hands of Cena too. He's got blades. and इधर it's- एसके रोसी ऐसे मारा है अपने मैचों में तो पता नहीं क्या कर रहा था He's हैं. going for it. Overheat. अपने मैचों में से ही लेके खेल रहा. That's a lot of discipline. Dude, I don't think Mimi has lost a gunfight yet. No, I mean, just in that last clutch. Yeah, one of the reasons why I love Harbor Oh, they're match gonna with Gecko defend. is इनके हिसाब से जाना पड़ता है the ना. code is so flexible. You can either use it to protect Wingman हर from चीज़ देखनी planting, पड़ती है. defusing, or from like crossing. You know, you can cross space with it. Yeah. Oh. Oh. It's Bella again. Ta-da. Against CNET again. With the op though. With the op though. 60 HP. Surely not. ओ भी Not जानी है trust. इसकी. Trust. Pros don't fake. अरे बहुत प्यारा नाइफ आया है यार. He's taunting across the stage too. Is he popping off a little bit? Things you love to see. That is so much fun. Red Bull clutch. That's now 2. We're gonna have to keep tabs on that because that's 2 times if Cena has Reveal lost the it? clutch Yeah, yeah. in a 1v1, back to back too. Here we go. Here's that reclaim I was talking about. So taking that staging space and then like reclaiming it for the side take. 10 seconds on that cooldown is what I saw. ये तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाना है. That feels fast to me. ये ना उसके बाद उसका भी. Surely you guys have stress tested this. How many dizzies can you हाँ get? इसके in a row? replays वगैरह तो The इन्होंने कौन सा most we दिखाना है. had सीधा in, like, start one हो of our जाना gameplay दूसरा. analysis games was I think 7. ये कहाँ पे रुकी है यार. चलो. Jet versus Jet I before said, यार. hey, can you count how many you cast? And we looked at the combat report and it was 7. Pankata in trouble as all of Tarek's team tries to take mid. वो default cross here पे खेल रही. सोवा. Harbor wall all the way through. Spike's not on Gecko right now, so you can't do anything with teammates passing the spike to Wingman or anything like that, right? It's just only if you have the spike as Gecko. Right. Oh, So you know, to we're gonna actually get do the hard, wingman but- plant or defuse, or actually for the plant, sorry, you have to have the bomb equipped. He takes it right off your back Yep. and runs with it. So he can't pick it up. He can't like walk over it if it's down somewhere. No man. Yeah. He can't walk over it, pick it up, and then plant. आगे That's मीमी the ने scary हाग part. If दिया. you There's send 3 with- players detained, sorry! ओह. देखो सारे हर डिटेन हो गए. बार सारे डिटेन हो गए. What a thrash. Nice. मरा है क्या? कि 2 मरे हैं. Still don't- Yeah. Nice shot. Oh, give me it. Nice. Give me it. बहुत प्यारा यार. ऐसा हो गया उसका. Oh, the सालम. crowd's having a good time. इसको Yeah, Pankata struggle. is too. That's the type of thing you want to see. SK Rossi went for it. Pankata again. ओह ये इसकी Please मोली try है. to do some more of those wingman plants because I think it is scary. You lose the spike if you're kind of, you know, Yeah. sending it in. यार मेरा कैमरा So I सही think लगा we're अब. kind of playing a little bit safe, but I'm sure we'll start to see शायद छोटा तो नहीं. strats come in here too. नहीं नहीं I can't wait यार to see कैमरे में से one वीडियो of बाहर these आ रही है ये one तो of these बता दो. geckos get their ult online. That कहाँ आ रही Yeah, है? me too. Yeah. It's like, I अब mean, सही. it's like a shark basically. That's how I Yeah. saw this. Yeah, we just saw it too. The four player Yeah. Tay looks insane, but you do need to capitalize on it. FRT just got his online. Uh-oh. वैसे भी तेरे पे ध्यान नहीं था. मीमी के ऊपर ध्यान था. That's the I wanna voice see line it. like too. That's Yeah, fun. wait, what does he say? Well, we're not going to find out this round. Mimi once again just farming स्टाइल भी FRT. अच्छी है यार. Oh, that was my fault. It was the killjoy नहीं, detain. मीमी मीमी है. मैं लॉयल हूँ. What is the voice line? The thresh. Yeah. What's the goal? Do you remember? Gosh. Oh yeah. All right, don't toss, actually. Don't toss. I want to experience it for the first time.
ये राउंड ट्रैकर का है Maza on the flank. Pankata again. I mean, Yeah, but he's weak. He's weak. He's weak. ये राउंड I mean ट्रैकर Maza's का good, but Pankata and Rossi, these guys are just Oh, playing in a tournament. Oh, अल्ट भी Let's है see it. there's no trust. मार लेगा You रस्सी gotta trust. He found him. ओ डून Look at him चला run. ओह इसके हेलो सुमन वेलकम टू द स्ट्रीम That's good stuff. I respect the effort. I respect the effort. That I was an respect the attempt. content attempt. Yeah, well, that was an attempt. Omen players be like, उमर प्लेयर का वैसे ये है कभी करो बड़ा मुश्किल हो जाता है yeah, I mean, Mimi is dominating. लेकिन जब से बफ So किया है many ना times उसका I'm like, टीपी okay, FRT, मुंह पे आ गया just उसके do टीपी something. Mimi's just like, no. Pause. Alright, we may yeah. get the thresh here from FRT. We'll see. और ये कैमरामैन क्या कर रहा है जो दिखा रहा Oh, है they're grouping. Tarek's team is grouping. Uh-oh. Oh my god. दीवारों के अंदर से कैमरा लेके जा रहा है Thrash Surely. gets 5 here. Thrash gets 5. There he goes. Look at him. वो देखो उसके वो जा रहा है प्लांट वाला Clear space. So, तो ऐसे दोनों बिल्डिंग स्टार्ट किया Wingman just saw them. 1 HP रह गया Right, जब so there was 2 that were hidden. They didn't get, but the other 2 that were line of sight of that cone did get concussed. So it's a stun. Yeah. Right. Okay. Very similar to a fault line stun. Oh, there's Exactly. वो Tarek. भी Tarek's छोड़ी using उसने Thrash. Tarek's using Thrash. Look ये at अल्ट है इसकी Oh my goodness. And there he went. He लग hit गई एक somebody. को I think Vela is detained right now. How long does that last? It lasts 5 seconds. वो जाके स्टन भी होता है और जो वो जैसे डिटेन नहीं होता किल जो आएगा अल्ट लग गया तो बंदा रुक जाता है वैसे रुक जाता है I ट्रैश believe की it's 10 seconds, so about half the time. But- और ये Done हो कितना जाता है। प्यारा है Feels like an यार eternity when you're just sitting there. Detained. Like nothing you can do. True, but also wait. I Can you let it- pick up Thrash? सबने वही रखी You है can. What? You can. The only difference is you can only do it once. Okay. Thrash gets tired a little bit easier. Okay. So we're not talking about 7 ults in a round. No, like 7 Dizzy. ults in a round. But that's still 2 ults in a यार row. मैं तो टीआरटी के साथ था ये तो एफआरटी जीत रही है That's like Jet getting refreshes, essentially. They're not. टीआरटी जीतेगी कमबैक आएगा क्योंकि अटैकिंग मैप है I mean, Team FRT is literally playing close plant right now. Oh, the defuse. Oh, my God. Yeah, Five please eight. try it. Do Please it, do try it, it. do it, Please do it. try it. उससे डिफ्यूज हो सकता है Vision of Oh, the bomb. you can't see it. There it goes. उससे डिफ्यूज Get him, buddy. So, ओए नाइस Oh, poor guy. and just to be clear, we heard a defuse noise there from Wingman trying to defuse. Right. Okay. Yeah, that was unfortunate. So. भाई बीटीपी भाई Yeah, so the way that टीम Astro, चेंज कर लो आपने you know, सोच लिया टीआरटी जीतेगी वो हार गई the spike. नहीं मैं फिर भी मिमी को सपोर्ट करूँ और नेक्सिस है यस न्यू एजेंट आया ही वो देख खेल रहा है उससे इतना प्यारा है वो डिफ्यूज भी करता है स्पाइक और प्लांट भी करता ही Defuse there, for the most part. एजेंट की एबिलिटी से That's. I mean, okay. Somebody got to sub in. Got a duck. Like, this is starting to get uneven right now. मैं क्या न्यू एजेंट आया ही उसकी एबिलिटी से स्पाइक प्लांट भी हो जाता है डिफ्यूज भी हो जाता है I saw him today. He was feeling. हाँ वो मैंने देखी आज ही मैं देख रहा था पोस्ट ग्रुप I mean, में how could he not? वो with मैंने अभी वो everybody लाइव पे देखा literally मुझे नहीं rooting पता for था him so वो देख लिया hard. वो खेल रहे हैं उस एजेंट से वो चेक कर It's got to feel pretty good to get an ace in front of a crowd like this, huh? मोली देखो Bala, that's just like you in your Boomerangs league, right? Same vibes. कौन खेल है All right. वो एक शो फाइनल से पहले एक मैच फाइनल करा का रहे हैं गुरु ना होने वाला इस मैच हाँ, के वो बाद देख रहा फाइनल हूँ। So dead. तारिक खेल है ना तारिक और वो एसके रोसी है ओपोनेंट बेस के मतलब अलग अलग कोई भी प्लेयर्स हैं और दो कंपेटिटिव उसके प्लेयर रोस्टी हैं सही खा गया Doesn't want to see towards the center. इधर देखा से मारा अपने मैचेस में सेज खेल रहा था Peripherals, and that way you can kind of maneuver a little bit easier. यार ओपन ही ना खेलता हर बंदा मुझे पता है उस लेवल पे जाके ओपन नहीं खेल सकता बंदा इधर तो ये सारे ज्यादा वो कंटेंट क्रिएटर है और देख इधर कितने मिस हो रहे हैं अभी मैच स्टार्ट होगा फ्रेम बाय फ्रेम उन्होंने किल मार दिया It did not hit. No. अभी तो वो वैसे चिल मॉल के थे ना इस तरह और उन्होंने वो रिवील करना था एजेंट और वो देख उन्हीं नाइफ चेक कर जो आया So how does Thrash work? Does it Vandals. have a fixed हाँ, लगा। distance where he Promotion runs and then करानी he थी pops? उन्होंने, Can है? you pop it early? Can you lunge kind of like Yeah. Sky Dog? How does that work? Yeah, so as Vandals the गए ना? kind of swimming through, left click. सलाम जानी वालेकुम अस्सलाम Attack. थक क्या हाल है In the air, you can left click again after a अगर तो swim. एजेंट बहुत अच्छा हुआ इसका नर्फ बहुत जल्दी आ जाएगा Player. हाँ इसका नर्फ है यार बहुत अच्छा एजेंट है तू सोच बंदा सोलो रह जाए ठीक है उसको बिठाए डिफ्यूज पे खुद एंगल नाप के खड़ा हो जाए कैसा It's like a cubby size, right? Yeah, cubby size. I say like. लाइव स्ट्रीम की काफी बड़ा एडवांटेज है जगह ना नहीं होगा यार सारे देखते हैं वर्ल्ड Within पैटी में Vandal stairs area.
वैंडल जी भी लग रही है मेरे को। ये क्या कह रहा है? अच्छा वो जो इसकी पहली एबिलिटी है ना, वो फेंक के रिवील करो और वो वहीं पे होता है, आप ऑर्ब की तरह जाके उसको दोबारा उठा भी सकते हो। तारिक साहब तो हारे हैं। जीप लग रही है। हाँ वैंडल ओनली वो फैंटम लग रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही वैंडल वो होती है फैंटम, वो देख सेम वही लग रही है, गार्डियन टाइप लग रही है थोड़ी बस। नाइफ प्यारा है यार, नाइफ लेना नहीं। ये विसिटी का नाइफ लूं कि ये ओनली नाइफ लूं? ना फालग है, विसिटी का भी फालग है, मेरे दोनों नहीं खाए। कमबैक आ रहा है, कमबैक आ रहा है यार, ये ओनली वाला इतना प्यारा है, तू देख नमूने पूरी शॉट निकलती है, तंजूरो बन जाना मैंने लेके। वो देख। Can you talk me through some of the iterations of what Gekko has gone through? Give me like the most broken state that you guys had Gekko in at one point. Well, the cooldowns. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? सबने ओनी पैक लगाए हुए, पुराना ओनी पैक भी लगाया हुआ, नया ओनी पैक भी लगाया हुआ, ओनी के से वो प्रमोशन कर रहे हैं बस नहीं की जरा। हाँ एजेंट की, और वो ये देख चेक कर, फिल्म रिलीज में थी, कपिल शर्मा शो पे बुला लेते हैं। पोकेमॉन लग रहा है, देखिए देख इसकी एबिलिटी चेक कर। So if you can find nothing and if you can find extreme, you know that there's a middle that कौन सी गेम खेल रहे हो आप लोग? मारियो फाइनल देख रहे हैं, फाइनल खेल रहे हो, सही है। देख रहे हैं सीन पे। He's heating up. Coming alive. देखता हूँ। Yeah, one of the exciting things I want to see, we kind of saw it a little bit there, is when we start to see like similar to बाकी मुन्ने किधर है? Oh wait, they're actually popping यार ये लगता है दोनों मर जाते, दोनों हग गए इतना, हग गए। हाँ ना, दोनों क्रॉस करे हुए थे, आखिरी वाला लग जाता था, दोनों मर जाते। So you have the Raze Nade Seize combo from Fade. Yeah. It's a beautiful combo on Lotus. मीडिया चेक कर, मैंने एक पोस्ट किया, चेक कर। Do something very similar, right? वैलोरेंट का पाकिस्तानी टूर्नामेंट करा रहे, 5000 रुपए प्राइस पूल है, लेकिन ना लो रैंक वाला ना, लो रैंक वाला। मैं गोल्ड तक लाऊं मैं, लेकिन वो उन्होंने क्या ऑब्जर्वर बैठे होंगे, जाहिर सी बात है यार, कोई स्मर्फ आएगा ही आएगा। जब मैं पॉपकॉर्न भी पड़े होने लगा। पर वैसे वुल्फी सोच, अगर कोई गोल्ड वाला एकदम एक अच्छा खेल जाता है गिल्टी से, हाँ तो क्या ये अजीब जाती, ये पॉसिबल नहीं है जो ये चाह रहे हैं ना। हाँ नहीं, यहाँ तो इनको चाहिए फुल हाजी लोग जो के साथ खिलाओ, कितना बोले। क्योंकि कुछ लोग होते हैं रैंक बेशक गोल्ड हो, पर गेम उनका बहुत अच्छा होता है, सेंस वगैरह। So you're right. Something like a seize, right? Like a seize mosh pit combo, instant kill. कोई अजीब ही है। हमारे पाकिस्तान में ना कुछ भी जो रोलें जरूर बनेंगे। यार बेटे भी भाई देखो, एक वो टूर्नामेंट करा रहे हैं, कह रहे अलाउ बस लो रैंक वाले प्लेयर है, पता कैसे लगेगा लो रैंक वाले हाई रैंक वाले स्मर्फ आ रहेंगे। उन्होंने क्या वी विल हैव इमॉर्टल प्लेयर्स एज ऑब्जर्वर। एक बंदा रैंक ना खेलता हो, सोचो ठीक है, वैसे खेलता हो, उसकी ये पॉसिबल ही नहीं है ना बेटी भाई, जो ये लोग चाह रहे हैं। तो वही बात है ना, ये रैंक का तो नहीं चाहिए टूर्नामेंट में। ये कई बंदे होते हैं अच्छा खेलते हैं, रैंक गोल्ड ही होता है उनका, ठीक है, हार्ड तक होते हैं, और वो अच्छा खेल रहा है, वहाँ पे कहेंगे स्मर्फ है। This is ridiculous. I think this is like one of the first or second times they've played the game. This with this team. आज बैठ के रोसी की देख रहा था, स्टोरी ऑफ एक्स के रोसी। देखिए तूने क्या? हाँ देखिए, स्टोरी ऑफ एक्स के रोसी। Look at how far back जब आई थी तब भी देख चुकी। He's just able to cut off and he rotates in. उसके अम्मा पापा पता नहीं कौन सी तमिल है। हाँ तमिल है यार, उसे समझ आएगी क्या कहते हैं नूबे को। और जब वो जा रहा होता है, जेट बाय करनी आती है उन्हें। नहीं किधर है? एसके रोसी ना टूर्नामेंट खेलने जा रहा होता है, वो उन्होंने एनिमेशन डाली हुई है, बीच में जेट होती है रोड पे, इंडियन के रोडों पे वो चल रही होती है, उसको बाय कर रही है। नहीं देखी? कितने क्लिप पे देखी? यार नहीं। देखो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये रोसी सही बात है, बाकी सारे और भी थे, पर इसी ने रोसी आएगा इधर। Yeah, we found,
I think you can kind of see it here. We were talking to them, but मेरा लड़के का गेम है सही कमबैक किया इसने double initiator. One of the things we were saying as a group was हालांकि जिस तरह CS:GO में था ये आवाम होती है डिमोटिवेट हो जाती है उस टाइम ये हैक लगाओ पूरी आवाम गालियां देती है ये पाकिस्तान में ऐसे होता ना तो अभी तक इसको गाली पड़नी थी हाँ इसकी स्टोरी आ रही थी कि एक प्लेयर होता था अब वो पार्किंग स्टैंड पे बैठता है जिस तरह वो है क्या कहती है उसका नाम है उसका जिप टैग वो स्कैम करके वापस आ जाए इधर नेक मान जाए वहाँ मैं कहना हरामी तू किधर है तो बता ये भी हो सकता है वैलो की बहुत आवाम अब इंडिया से है तो उन्होंने हो सकता है हाइप देने के लिए इंडियन प्लेयर रखा हो कि इंडियन भी देख रहे होते हैं हो सकता है ये भी हो सकता है यार उधर की कम्युनिटी स्पोर्टिव है जरा पाकिस्तान की निस्बत बहुत स्पोर्टिव है इधर कह रहे हैं मुंडा की करता गेम खेलता है कड्डो इनू ये लव नहीं मुंडा गेम खेलता है मुंडे तो साउथ अफ्रीका में We're actually going to throw it down to the desk, have them break down all the Gecko stuff that they saw. Yinsu, what do you think? Yinsu 51 level हो गया PUBG का. Strength, what do you think? डोरेमोन मेरा तो मेरा मर लगे वो कस्टम नहीं उस टाइप में दे रहा मैनुअली PUBG PC Yep. For me on the new agent, I Oh feel yeah, like this is I gonna will be play. insane Let in me ranked when download. it comes out for the first time. Not sure about pro play yet. बेटे भी भाई से जरा यार मैं खेलता रहता I disagree. I feel like this is इसको नेट दिखाए जब मीडिया में जाके देख this score line should have been further. चलो भाई apart, हाफ 'cause I just टाइम feel हो like after those initial 250 MB है तो मेरे बच्चों की आती है इतनी get the team rallied back. तू क्या एक मिनट तू आप क्या ही तो ले आने चल निकले भाई आई एम एक साल लग गया 18 होने वालों हटो वो ये बीच में क्या कमेंटेटर बनाई हुई है चंपैंजी की बच्ची ये लग रही है न्यून है नहीं भाई प्यारी कहाँ से लग रही है विंगमैन सारे पूछे इसकी हाइड कौन वाली सी बेहतर बिल्ड है अच्छी है सारे कह रहे हैं विंगमैन मैं तो ट्रैश जो वाली जो अच्छी फ्यूज लगी और प्लांट करता है हां शायद ये जो प्लांट करता है बहुत हरामी एबिलिटी है और तू डिफ्यूज करते पता क्या स्पाइक के ऊपर चढ़ के उसको खींच जाता है हरामी है बड़ा ये देखो और की तरह उसको लेना था वापस ये बहुत ओवर पावर्ड है मेरे हिसाब से वैसे माउस कहाँ से मंगवाया है माउस पैड आई मीन यार ये माउस पैड कराची से ये मैंने कहीं पर देखा है यार ये मैंने माउस पैड पहले भी कहीं देखा ग्रुप में तुझे तुम्हें मैं वो देख कैसे डिफ्यूज मुझे नहीं मिला ये यार इसके पास ये लास्ट पीस ही रह गया था सारे बिक गए थे फिर मैंने यही वाला ये ग्रुप में नाम क्या लड़के का यार लड़की है वो देख चैंपियन मेंडल आया हुआ है वो वाइपर बन के आई हुई है वो देख वो चैंबर बना हुआ है असल चैंबर ना मुझे शराउड लगता है क्या लगता है चैंबर नहीं भाई उसे क्या करना चैंबर बन जाएगा बाबा जरा कद में छोटा भी ज्यादा कद में बाने फाइनल्स हो किस जगह पर है यूएस ब्राजील और ब्राजील की ही टीम है लाउड जिसका फाइनल है फनेटिक के साथ If Wingman is planting or defusing, अच्छा मुझे लगता है जीत जाएगी फनेटिक इस दफा पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा है फनेटिक जीत जाएगी लेकिन लाउड पे मेरा दिल है जब से स्टार्ट हुआ विसिटी लाउड को सपोर्ट कर रहा हूं लेकिन मुझे लग रहा है जीतना फनेटिक right in the 1v1 scenarios, तो हालात जा रहे हैं फिलहाल तो फनेटिक ही लग रहा है फनेटिक वैसे ही बढ़िया टाइम बहुत अच्छी खेल रही है फनेटिक के कॉम्बोस बहुत अच्छे चल रहे हैं उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है फनेटिक का मैंने देखा ना जिस तरह और लाउड वैसे भी यार बहुत दफा जीत गया कुछ नया होना चाहिए और लाउड जब वो शॉट आउट से मर गई ना ना तो ऐसी शक्ल में भाई वो कहां जाता है खेली जाती है ऐसी पीछे लोग भी थे टीम सारे I mean, we can hear it and go, okay, instant ये kill. हरामी दीवार के हाथ पर मारे हैकले है I really love what Paula's doing here. हैकले है भाई So the sky is kind of हैकले है बैन करो helping Tarek with the यार पबजी मोबाइल में नहीं होता गलती से स्प्रे बाज जे हैकर फैन टाटा बाय बाय हैकर ही इतनी दूर से स्प्रे वन टैप अल्लाह माफी एक गोली में लेके आई मेरी रजिस्टर ही नहीं alluding to it earlier, but it really feels like Gecko's built in such a way that players are rewarded. चौधरी भाई ये गलत है चौधरी भाई They have occupied with utility beforehand, right?
यार तो एक्सपोज कर रहा मेरी स्ट्रीम पे सबको है। मैनेजमेंट नहीं मैनेजमेंट अपना रूल जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते, ठीक है? मर्जी है भाई। बोलना नहीं है आपने, मैनेजमेंट जब मर्जी रूल चेंज करे। अरे पाकिस्तानी लॉबी नहीं लगी यार, रिक रहा दो। पाकिस्तानी लॉबी नहीं लगी यार, ये सही रोल आता है। ये देख प्लांट करने जाने लगा, चेक कर ये देख यार कितना क्यूट लग रहा है। देख मम्मी मारी है पूरा। ओ ये भी मसला है, उसको मारो स्पाइक गिर जाता है, ये भी तो मसला है भाई। लेकिन फिर कोई ऐसा लग रहा है यहाँ है। कौन सा नया कैरेक्टर, इसका नाम क्या है? यार ये नया है, नाम मैंने खुद नाइफ हो गया, नाइफ कर दिया बच्ची को, नाइफ कर दिया उसने यार, बेचारी को रोने लग जाएगी वो। देखो स्ट्रीम पे कहेगी मैं तो लेडीज थी, मेरे साथ ही कर दिया। मैं वुमन थी, वुमन। बहुत हेट है इस कम्युनिटी में लेडीज के लिए। यार अब उन्होंने नाइफ किया, हमने थोड़ी ना पकड़ के उसको गाइस को जाके नाइफ करो यार, अजीब। बिल्कुल हाँ ना, लेकिन हेट बहुत है इस कम्युनिटी में यार, तो लेडीज को सपोर्ट यार तुम प्यार कर लो यार, अजीब। हर प्यार बंदा इधर 6 बंदे बैठे, इधर लड़कियां सबने चले जाना, तू कह रहा हेट है लड़कियों को। हाँ बेटी भी भाई, इधर बच्ची है स्क्वाड के लूलू लग गए। बेटी भी भाई पहले कनेक्ट हुए थे ना। क्या है जरा ये वीसी सही करो यार। हाँ अब लगा ना दुबई में, के पता नहीं केड़ा बाबू। ये इसकी एबिलिटी है कि जाके वो खुद प्लांट करता है। हाँ नाइस यार। क्या चाहिए यार? सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लो सेज बार। नाइस बोल रहे हो ना, बाद में रोना है आप लोगों ने। ये ओपोनेंट टीम में कोई वैशी हो गया ना लेके। हाँ ये भी है। उसने खोल देनी, उसने कहना आओ जरा उन्हें पूछना हूं ना राव। उन्होंने कहा छावे छावे आइयो। वो दे प्लांट भी कितना रामी स्टाइल में करता है, डीजे स्टाइल। डिफ्यूज वहां पे आ करते। नूबे को बुलाओ, से कह तेरे काम की चीज आई है, वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, यही इस्तेमाल कर। अबे तू मेरी बात सुन, इस पे सारे पता क्या कर रहे हैं, हार्बर का वो शील्ड वाली स्मोक नहीं होती, वो फेंकते अंदर प्लांट हो जाता है, वो उसके पास गोली नहीं लगती। स्मोक कर दे बंदा अंदर जाके प्लांट कर दे, वैसे सारे डरते हैं प्लांट करने से जाके। अब ये कर दिया, सेज की जरूरत नहीं पड़नी। चल बच्चे कार्टून भेज। अब कहना ही नहीं सेज पिक स्पाइक। उन्हें पता भी नहीं ना होगा प्लांट कौन कर रहा है, बंदा उधर से जाए स्मोक के अंदर, पीछे से वो अंदर बड़े साथ ही टिच कमांडो। यार अकेला बंदा हो, वो प्लांट दे, वो मारने लगे, बंदा उड़ गया, वो एम होगा हमारे पास। मुझे मैंने स्क्रीन ले ली है और मेरे पास वो जीपीयू नहीं मेरा सपोर्ट करता उतनी हार्ड। 2000 हर्ट्ज ले लिया। मतलब क्या कर रहा है, इधर फेंड कर दे, हमारा सपोर्ट करता है। 40 लिया लेकिन 460 लगा हुआ है मेरे पास। क्या फायदा खेलने का? नहीं मैं पबजी नहीं खेलता, कोड खेलता हूं। अच्छा लगाते हैं, कोड खेलता तू। हां भाई हेलो खेल लिए। वो देख कर प्लान, ये पबजी मोबाइल खेलता है, लगता है 460 रखा है इसने। 10 करके प्लांट मारता है वो है यार, वो मजबूरी है भाई, पैसे नहीं जमा हो रहे उसके। 240 हर्ट्ज के लिए जमा हो गए हैं। मैं बताता हूं क्या हुआ है, मेरी बात सुन। इसके लिए भी बड़ा चक्कर हुआ था, जिनसे मैंने मंगवाना था ना, उनकी शॉप है उधर कुवैत में। यार ये नाइफ कर देते, पाकिस्तान में यही मॉनिटर मिल रहा था 2,05,000 में, ठीक है। और मैंने उनसे मंगवाया है 75,000 में। अच्छा तो उधर से जीपीयू भी मंगवा लेना था। फिर भी अक्लमंदी वो जीपीयू भी उन्हीं से मंगवाया, लेकिन वो अब खुद लेके आएंगे रमजान के मिड में। उन्हें कहना था जीपीयू भी भेज दो, स्क्रीन बाद में ले आना। मम्मी का एम है नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे ना। यार समझदारी करता 144 हर्ट्ज लेता, साथ में कार्ड लेता। 240 क्या कर दिया तुमने? 144 उनके पास कोई अच्छी नहीं थी बड़ी। बस बनने का वो तो इस बार कैसे मार रही है। कमबैक आ गया, कमबैक 69 लेजेंडरी। ओ दे मिस कर गया रोसी। ओ मर दरवाजा। मैं तो जब भी ऐसे एक रस पिक लेके जाता हूं जो बी पे होता है, उसको कहता हूं फौरन दरवाजा तोड़। ऐसे करो, उसी को टिप मिर्ची तेरे पास वो एग्जिट टैग पड़ा है? नहीं बेटी भाई, क्यों? हमने लिया था ना वुल्फी, आखिरी दफा कितने के लिया था? 1000 रुपए का लिया था, खत्म हो गया भाई। तब बीटीवी भाई हमने 900 का कुछ का लिया था। हां नूबे को लेके दिया था 1 महीने के लिए।
मैं इस पे एपेक्स खेल। मैंने भी वैसे मेन एपेक्स खेला। अच्छा आखिरी के दिन होती है ना उसके पागल हो जाता है वो भी। शुरू में बड़ा अच्छा चलता है, आखिरी के दिन जब रह जाते हैं ना कहते हैं चलो पैसे पूरे हो गए वो कहते आ जाओ, फिर बीच में मस्तियाँ शुरू कर देता है। और इससे आईपीएस तो नहीं उड़ेगी? किससे? रिलैक्स से? नहीं उससे कोई फर्क नहीं। जैसे डिस्कनेक्ट करो ना उस टाइम ठीक हो जाता है। मैंने भी इस्तेमाल किया है इतना, मेरा भी क्योंकि नेट का मसला था ना, फिर मैं वही इस्तेमाल करता था। तो जब डिस्कनेक्ट करोगे वापस वही सेम आपका पीसी हो जाएगा। देखना मिमी का तो ठीक कुछ मिमी को कुछ नहीं बोलना। एक सेकंड, दोनों टीम में एक एक लड़कियां? नहीं, एक में 2 लड़कियां बस। और वो टीम फनेटिक है दूसरी है। फनेटिक का तो शुरू ही नहीं हुआ अभी, ये वैसे करा रहे हैं, लगना है इसके बाद लगना अभी ये वैसे ही प्रमोशन जरा मैच है। मतलब अभी मैच असल नहीं, इसीलिए मैं भी सोचू लड़कियां फाइनल में, वो समझ नहीं आ रही मुझे। और वो लड़कियों का दूसरा होता है गेम चेंजर। मुझे था वो बस सीधा जाता प्लान करने, वो खत्म हो गया था इसका टाइम। यार दोबारा से वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आरामी है कुछ ये, बहुत आरामी। बस तू ये मेन कर ले, आने लगा छोड़ फेड फोर्स हुआ सब, ये मेन कर। बस यही मेन करते हैं यार। मेरा चैम्बर मेरी जान थी, इन्होंने रामियों ने वो भी नर्फ कर दिया। इसे भी कर देंगे, देखिए टाइम नेड़े ही है इसका भी। क्या किया उसमें चैम्बर में? उसकी तरपालें कम कर दी हैं, उसकी लिमिट कम कर दी है वो ट्रैप की। एक लिमिट में अब लगा सकते हैं कि मतलब समझ लो तुझे पता है इसकी अल्ट क्या है? इसकी अल्ट ट्रैश, वो जाता है बंदों के अंदर बजता है, वो जैसे किल जो है का बंदा नहीं हो जाता अल्ट में रुक जाता है कुछ, वो रुक जाते हैं बंदे और 1-2 बंदों को करता है। है क्या वैसे ये डुलिस्ट है क्या यार? सेंटिनल इनिशिएटर होगा या सेंटिनल होगा, यही मेन करते हैं। अब मैं कहा गया तारिक क्या है? लेकिन उनका टैग भी है ना। रोसी साहब ने पढ़ी है ऑपरेटर। तारिक साहब उधर बॉटम फ्रैग करके नाम रोशन कर रहे हैं। और यार उसको एजेंट भी तो वो नया देख खेल रहा है ना, वो जेट के रेज इधर खेलता है, उसको न्यूज़ एजेंट वो पेज का काम कर रहा है उधर, इसलिए बेचारा नहीं किया। वो मस्तियां लगा हुआ है रामी। दोनों के जो टीमें है ना उनका वो बंदे, वो देख सो ये रिवील करते ही बंदा यही तारिक ये जब हो गया ही तारिक। हाँ जी वुल्फी क्या है? ये तो ठीक है यार, मैच बंदे ही बंदे ने बोर्ड तो कोई यार नहीं किया यार। मैं ये स्ट्रीम खत्म होती है ना, मैंने भी करना है, मैं आपको भी कराता हूं। Sorry, you can continue. Oh, miss कर गया। सही। So the thematic ओ नहीं लगी ऐसे। वो तो अल्ट तोड़ दिया। चाका कराता है इसे, चाका। हो गया चाका यार, अगर ये चाका कराती इसका बदला पूरा हो जाता है यार। मैं होता चाका कराता। मैं खुद मैं कहता वड़ की गेम खड्डे में चाका कराओ। We'll pick this up in a moment. Absolutely. ये इसकी ट्रैश मिलती है, ये देखिए अल्ट है, ये मच्छी है तो आंखें मिल रही है वो देख। जी क्लच करने लगी यही, चेक करी। नहीं करेगी, नहीं नॉट पॉसिबल। एम नहीं है, बताओ ना तू पहले ही बच्ची को मरवा दे। ओए ये तो कंट्रोल भी हो रही है उसकी तरह। स्काइड ओ फिर नाइफ लगी है, मार दिया उसको। बेचारे बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे हैं यार। मुझे भी तकलीफ हो रही है। वो देख 18 किल करके टॉप फ्रैग कर रही है, वो जुल्म नहीं है? तो मेहनत कर रही है ना अगली। ठीक है वो देखे देख। ओए क्या हमें भी 2 जरा स्पॉन्सर के स्किन हम भी चेक करके बताएं हमको कैसी है। निकाला तुम कौन? हम इनके स्कूटर यार हम गेम खेलते हैं यार। ये रोज सब कैम करके बैठे हैं। स्पैम ना हो जाए। ए रोसी मैं लगा ओह स्पैम हो गया ना किसी ने बच गई। तो उसने मारा ही पर रोक गया। वो बाहर आ गया यार।
बच गया। तू पीछे देख रहा है स्क्रीन थोड़ी, मैं तो स्काई की वजह से जेट मर गया तेरे पता। वो दूसरा तो गया ना, वो जेट मर गई उसके वजह से। स्काई की वजह से बच्चा बड़ा बच्चा है, उसे स्पैम देता ना थोड़ा ज्यादा। ये देख भागता हुआ कैसे आते हैं कार्टून की तरह। स्पैम इस जगह पे देना ही ज्यादा चाहिए। अरे तू आगे चल रही है, मैं 2x पे लगा के देख लूँ ना, जिस तरह स्ट्रीम स्नाइपिंग करते हुए नहीं 2x पे बनना चाहिए। Oh, so they do expire if you don't pick them up quickly enough. Okay. That was such a beautiful मैं तो वुल्फी की स्ट्रीम देख रहा हूं। मेरी स्ट्रीम पे देखना शोरिया। तेरी भी साथ में खुली हुई है स्ट्रीम, दोनों खोली हुई है मैंने। And when you're reclaiming these globules, oh no, nice. This flank is insane. वो डिफ्यूज कर रहा है, वो देख, वो डिफ्यूज कर रहा है। ओह यार हाफ डिफ्यूज कर गया वो शायद। That could have been awesome. I was excited too. Nice यार। भाई कमबैक करूंगा। I was thinking to myself, यार ये तो बड़ा डबल माइंड कर रहा है यार। हेलो अहमद, वेलकम टू द स्ट्रीम। There's no way if it can be taken down. How much HP? 100 HP. उसने दोनों बिल्डिंग लगाई है, प्लांट वाला लगाया और वो लगाया है। वो देख कैसे डिफ्यूज कर रहा है ये निका। ये मुन्नी को बुलाया यार, ये नुबा मुन्नी किधर ही यार, फोन किया मैंने उसको यार, उसका वो चल रहा है। इसका बंद है नेट बंद, वो किया पहले नेट ऑन था फिर नेट बंद हो गया। ये बहुत बढ़िया आइटम, मुझे कहते कल लाऊंगा। I like that they're committing to this attempt. एक बंदा बहुत बिजी है इस टाइम, बहुत लग main ways. I'm so lucky to have you. Use the tools you got. I think ठीक है, समझ गया। क्यों ले रहे हो यार उस बेचारे की, क्यों नजर लगा रहे हो तुम लोग उसके रिलेशन को? किसके? इसका नाम लिया हमने, नहीं हमने नाम लिया किसी का। उस स्टेटस उसने ही लगाया है यार। क्या तो हमारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। हाँ ये शक भाई, ये कैसी बात कर दी तूने मुझे? अस्तगफुरुल्लाह, ये इसकी ज़हनियत ही गंदी है। वुल्फी है ना, वुल्फी इसलिए। और तारिक देख बॉटम फ्राई करके चाके मार रहा है। चाके नहीं मारा, वो उसे क्लोज बुलाना चाह रहा था, उसके बाद क्लासिक था, वो राइट क्लिक मारा। टीम तारिक, दूसरी का क्या नाम है? FRT का फुल फॉर्म है। वो देखा से प्लान कर फार्ट रिप्ले फार्ट। मजा आएगा ये आने लगी। मुझे पहले यही समझ लगी है। सारी बॉटम फ्रैग सारी बॉटम फ्रैग कर दो। कह रहा को फिर रैंडम get the spike down, you are 5 guns up, right? As opposed to the 4. रिवील चेक कर लेगा। वैलो वालों ने कहा है तारिक स्ट्रीम करता है, VCT की 1.5 लाख वाचिंग आती है, इसको अपने पाल बुलाओ, वाचिंग हम लेंगे। इसकी स्ट्रीम नहीं करानी। वैलो वालों ने कहा तुम्हारे हाथ से एक मैच खिलाते हैं। Does this feel like we've had more smoke spam kills than any other tournament before, Bala? इसकी वाचिंग ज्यादा इस तरह शुगल भी लगाता है ना स्ट्रीम पे, वो टेंस टूची मुई चुप करके बैठ जाती है। शुगल लगाता है और वो हर वक्त लाइव होता है ना, कंटेंट क्रिएटर है भाई वो, हर वक्त वो लाइव रहता है सारा दिन। फ्लैश हुआ स्काई, ये हुआ तो फ्लैश ही है, लेकिन हुआ बाद में। As it's scanning, yeah, that's one of the great things about it is it scans, and although you can shoot it to kind of mitigate all 5 getting shot compared to some other flashes. जो स्काई का फ्लैश, उसका स्टंट में बेचारा क्या करे? You push in with your team, you're able to kind of follow Dizzy in and really like take that ground. Oh, and even the sky flash. इसकी कॉल्स भी नहीं देखी, कैसी कॉल्स होंगी। Very cool. तारिक को नाइफ मारो जाके, सारे इकट्ठे चढ़ जाओ इस पे। वो फॉर सेकंड नहीं था CS:GO में बैन हुआ जो, तो ये वही खेल रही रोती है, ये वही खेल रहे हैं इसके रोसी भैया। इसके क्या है? यस के रोसी वही है, इसने नेम चेंज कर लिया, वही खेल रहा है। बढ़ गए भाई, ये भी दुनिया में है, इसे होश कोई नहीं है। ये PUBG मोबाइल खेलता है, मैं देखता नहीं हूँ यार, नहीं मैं गेम नहीं खेलता, ठीक है। ये डूबा हुआ था, वो देख ऊपर से नाइफ करने गया, वो देख एग्जैक्टली। उसको कवर मिल गया।
playing against and with वीटी भाई समझ आते हैं बात avoid getting flashed because you're going to have that moment यार especially in, like तुम सब उन्हीं में थोड़ी सी वो थी ना आवाज जरा बड़ी लेवल की होनी थी deal with that multiple यार अब आएगी गेम में पता लगा इसकी वॉइस लाइंस पता नहीं कैसी होंगी न्यू एजेंट की वो एक्स्ट्रा की तरह ना हो ना 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 वो तो डब्बे में पीछे चुप गए जाके अब तो स्पैम होगा उधर ओ टोपा उड़ा ओ गया नाइस ले गया अपना काम कर गया और क्या चाहिए यम यम हो गया कीबोर्ड क्यों खराब हो गया तारिक भाई छुट्टी हो गई मुझे लग रहा है बस तारिक भाई का कमबैक इतना ही था जुनून ज्यादा चढ़ गया था वो कह रहा है मैच खत्म करो फिर मैं जाके लाइव करूंगा थोड़ी कोचिंग मैं लेना वा क्या तुम लोगों ने मेरे हरवाया मुझे लग रहा है वो करेगा लाइव वो इधर जो सेमीफाइनल हुआ है ना वो इधर ही बैठ के ना लाइव कर रहा था इधर से इसने ये एसके रोसी कौन सी टीम से खेल रहा है यार इधर से तारक ने 1 to 5 निकाला तीसरे में तुम चौथे में तुम ओयो तीसरी ऑन करना है जाके 10 स्ट्रीम अब वो इधर ही करेगा घर थोड़ी ना जाएगा छोरे ब्राजील में बैठा है अगला ओके चल ऊपर घर दफा हो गया मैंने स्ट्रीम करने देनी तुझे बैन है तेरा वाचिंग ले जाना तो सारी ये करना तो बैलो को स्पोर्ट ही है ना यार हर मजा कह रहे हैं हमारे रोटी तारिक बुलाओ पाउला ने कहना इतना पैसा लगा के टूर्नामेंट कराया बाहर हो गया जी बाहर हो गए 3 तारक बहुत फ्रैगिंग की है तारक ने मेहनत मुशक्कत करी है इन्होंने एसके रोसी टॉप फ्रैगर है नहीं वैसे ऊपर वो पेन कैंडा पेन काटा एस मार लाइव कह रहे हैं बेचारे का ये हो अब नहीं करेंगे अब नहीं लड़की है ना से ना अभी यार 2 बार कर दिया उस बेचारे को यार क्या लेना उससे इन लोगों ने इतने आराम यही काम देख इनके यार कह रहे हैं दलील करके मारेंगे दलील वो छोटी लेके बैठ गई छोटी एस है हाँ एस है और वो कमबैक वो हो जाएगा क्यों चांस मिल जाएगा छोटी में जा जाएगी इसे वाजन नहीं है मुझे लग रहे थे यार ये तो बच्ची के साथ प्रैंक कर दिया इन्होंने यार भाई क्या गेम लेके गए अल्लाह की कसम मजा आ गया मजा अब स्टार्ट वो तो जेट का वो पहन के आया यार कितना बैड लग रहा है जेट का नहीं बेटी भाई लड़की इस्लामाबाद से ना डेवो पे तो उधर ना चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे होते डेवो के वेटिंग टर्मिनल पे मैंने उधर फोन चार्ज लगा के ना लॉक कर दिया चाबी अपने पास रख ली वो बस के अनाउंसमेंट हो गया मैं बस में जाके बैठ गया फोन लिया ही नहीं और जब गेट से बाहर निकली तब बस रुकवा के वापस गया फोन लिया अंदर G2 किया यार वो देख G2 का ट्राउजर पहना हुआ एक तो काछी पहन के आ गई 2 बार नाइफ इसलिए हुई है बेटा वो क्या इतनी बच्चे वेलो खेलती है कौन सी सर्वर में खेलते हैं यार निश्चित पता लगा निकालो भाई सर्वर का एड्रेस निकालो जाना पड़ना है यहाँ पे अन्य में जाना पड़ना है वीपीएन लगा के वीपीएन लगा के बर्गर ऑर्डर करेंगे नॉर्थ अमेरिका में लाउड ज्यादा स्पोर्ट लास्ट के क्योंकि ब्राजील में हो रहा है फैनेटिक के प्लेयर का वो कहां है इसके अगला मैच फाइनल है हां अब ये फाइनल स्टार्ट Ryan, let me ask you this. We just saw Gecko. Sorry, Lord. Everyone's very excited. मौत देखो ये बड़ी है। अच्छा तारा क्या रामी ने बची रखी है टीम में। यार वो कॉम्पिटिटिव प्लेयर है और क्या चाहिए तारों को अगली ने टूर्नामेंट जितवाया गेम चेंजर उनको मिमी ने इसीलिए 2 बार नाइफ हुई है और इसने नहीं वो नहीं हुई दूसरी हुई है कल मैं पढ़ा न्यूज़ एक जगह ना उधर कहते हैं इंटरनेशनल 5वें नंबर पे एक फुटबॉल टीम थी लड़कियों की उसे 15 साल के गली मोहल्ले के लड़के हटा गए मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम लड़की हो के बात कर रहा हूँ मैं इसे लड़कियां में देख that's crazy. I can't believe it. वैसे नहीं करती
वो रहता बात है यार। यार ये बड़ी प्यारी एबिलिटी है यार, ये प्लांट वाली टूटा हुआ ये मेन कर ले यार। ये नर्फ हो जाएगा, बहुत जल्द नर्फ हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक। हाँ यार वल्फी हम डेथ मैच ही खेलेंगे यार, हम भी जरा यार फाइनल स्टार्ट होने लगा, KFC मंगाया, आने लगा ऑर्डर मेरा। यार मैं भी कुछ जाएगा ना ओ अभी हो जाना स्टार्ट, इन्होंने 10 बजे होता है, 1 घंटा मैसेज आया होगा। अबे बच्चियों के इंटरव्यू लेने रामियों ने टेंशन ना ले, नहीं कोई इंटरव्यू नहीं लेना। ये पिक्चर पिक्चर लेनी है, नहीं स्टार्ट होने लग गया। अभी उन्होंने आगे पहले हाथ सेके गरम करने हैं, उन्होंने कहना सब्र कर। नहीं अभी उनकी एंट्री देखिए, वो उसकी फैनेटिक की एंट्री कितनी मजे की होती है, फनी, वो देखते हैं। कल तो सॉरी मैंने कहा कल चादर लेके उधर ही सो गए थे राम। हाँ चादर लेके सो। उन्होंने देखा सिने वो संजय को जो रोस्ट किया फैनेटिक ने तो वो पता ट्विटर पे क्या अपलोड किया है, वो बोर्ड नहीं होते रेन वाले, देखिए मैंने उसको सेंटिनल की शर्ट पहना दी। हाँ नहीं यार एक डेथ खेलते हैं आप उसमें। यार मेरी गेम रुक जाओ, मैं देखने एसएसडी है ना तुम्हारे पास, 2 मिनट में होना चाहिए। आप बड़ी जोर से गेम आई है। अगर ये अभी स्टार्ट हुआ तो नहीं खेलेंगे, देखते हैं। 3 मिनट में स्टार्ट होने लगा यार, 3 मिनट में। और ये टाइमर 3 मिनट का ही आता है, तो देखिए स्टार्ट कितनी देर में होगा। ये 3 मिनट का रीसेट हो गया, 5 मिनट पे चले जाएगा। नहीं हो जाएगा। ओए तो गेम ऑन कर चुप करके। यार लेजेंड को तो फोन कर यार। ओ मरा वही प्रोसेसर लेके सो रहे तक ये नीचे रख के। ले से प्रोसेसर ले ले। ओ प्रोसेसर मुझे नहीं चाहिए। ओए हमने पैसा तो लगाया नहीं, मैं किस पे लगाऊं अपना पैसा बताओ। तो यार ये तो इसका था, अभी हम लगाएंगे लाउड वर्सेस फैनेटिक में पैसा। जाके ट्वीट कर, तेरा ट्वीट आएगा नेक्स्ट इधर लाइव पे। जाके ट्वीट कर, इधर तेरा ट्वीट आएगा। क्या करे? हैशटैग लॉबी इधर ट्वीट कर रहे हैं, देख अपनी पिक्चर लगा, इधर आएगा ये देख। हमको करना I want only wingman to plant। हमने क्या करना है? May you forever। क्या गाना लगा हुआ है? Hold on बम्बू। चल स्टार्ट अपनी बता दी, मैं 10 मिनट बंद कर देना। नहीं आता देखनी अभी, पहले उन्होंने आना है, कुर्सियां गर्म करनी है, हाथ गर्म करने हैं, टाइम लगेगा। 5G इंटरनेट छोड़िए की चीज का आ रहा है। डेथ मैच वार्म अप। डेथ मैच में तो ऐसे FPS आते हैं ना, स्वाब का काम है। बिल्कुल। और मेरी गेम फंस गई यार। एक तेरा पीसी यार आज मैच कौन जीता है PSL का? पता नहीं, मुल्तान का चल रहा था इन लोगों का, देखा ही नहीं। और पागल हो गया भाई इस बार। किधर है? PSL मैच टेबल पीसी चल रहा है, गेम ही नहीं सिर्फ चल रही। अल्लाह खैर करे। फ्लोर 5 में से सिर्फ एक मैच आ रहा है, मुल्तान सुल्तान भी एक आ रहा है। फ्लोर और वो बराबर है मुल्तान सुल्तान। कराची बेचारा तो जलील होकर रह गया, कराची ज्यादा कोयटा जलील हो गया। लीव कर दूं? चल गया। I got your backs. Just, you know, from the front. Fight. Stay safe. क्या चला गया? रुक गया मैं वो लोडिंग स्क्रीन को। यार हाँ 2 हो गई इधर, पूरा वार्म अप हो गया, 50 सेकंड का स्टार्ट भी हो गया फिर। और गेम क्रैश हुई थी ना, वो ऑन हो रही है। वो गूगल चला रहा था। मेरा भी ऐसे होता था, याद है बार क्रैश ही रहती थी यार। क्या होता था अभी? यार विंडो करूंगा, विंडो से कुछ फर्क पड़ेगा।
ये विंडो ने ना बहुत पहले से आ रहा है इसमें। इसमें देना 500 FPS आ रहे हैं भैंस की तुम। इधर ही कैंपर कैंपर या तो लोकेशन में टू बेटर। ओए लोग बचावे में आ जाते हैं। ही वाज फैंटास्टिक। एक मिनट रुको, मुझे हेडफोन सेट कर। ओए मैं हेडफोन सेट कर रहा हूं। तो देखो देखा है एक 20 क्या मैं भी 3 दिन से एक तो अभी किसी का प्रॉब्लम कर लिया यार। चेक करिए मिर्ची स्टार्ट हुआ है कि नहीं मैच। अभी टाइम मैं बता रहा हूँ। ओह नाइस सही। ओए बैक स्टैबर। एम थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है ना। डेथ मैच चल रही है नूबे की तरह। बिल्कुल कर रहा है एम तो है ना। Not your best. यहाँ पे अच्छा क्रॉसर गायब हो जाता है। वाइट वाइट है ना। चलती है में। Oh my God! Alhamdulillah. Nice. 112. Head by two. I win again. एक 20 मिर्ची देखी। ओके आया। Let me check.
to hear myself with the crowd. Oh my god, it's so loud. मुझे पता है ना बड़ा टाइम लेते हैं ये कमेंट्री यहाँ चल रही है कमेंट्री Yikes. ये एंगल बहुत आरामी है ये बिल्कुल बारीक से मुंडी लगा के मेरा आ गया खाना सही वो बैंक से लो हुआ था एक गोली भी नहीं तो हाँ See ya. I don't think so. Oh, this works. Nice. 1 minute remaining. मैं आगे भी जा रहा था Night night. ओए 120 नाइस 30 seconds left. रामी ले जाने ले लिए दोनों नहीं मिली नहीं मिली थी मिल गई नहीं मिली थी नहीं मिली Baby, clear. 10 seconds left. ओए अभी तेरी मुंडी नहीं नजर आई मुंडी स्टार्ट नहीं हो गया ना अब तक स्टार्ट Too easy. Okay, Zay wins this round. अभी नहीं है कि बड़ा टाइम लेता है टाइमर शुरू होता है ना काफी टाइम लगाता है हो गया फिर 5 मिनट का टाइमर लगा दिया मैं तो तय ना टाइमर लगा देते हैं बार बार यार तारिक ने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी जब मैं लेके आया खाना लेके रुकिए तारिक में वो क्यों बस कर बेचारा मैं लेके आया अपना खाना आया मैं जाना कहीं आया वाले दी
यार मैं रीस्टार्ट करके अपना राउटर ओके क्यों पड़े हैं इसके हेलो हेलो खाओगे? ओए ना देखो एक क्लेम आज नहीं क्या ना देखो एक मिनट आ गया सेनोरिटा एक साहब अगर आज लाउड जीत की ना मजा ही आ जाएगा तुझे क्या मिलना है कुछ भी नहीं यार होता है ना बंदा अपनी टीम को सपोर्ट करता है यार मजा आता है बहुत पाकिस्तानी टीम ही जो सपोर्ट कर रही है कोई नहीं यार पाकिस्तानी नहीं है क्या करे मैं चल जाऊँ खेलने तो क्या बदनाम करा के आएगा हमें इसलिए ना ही जा यार नूबे को भेज नाम पर हमारा रोशन करके आए कोई लो भी होगा या फिर एक हमारे पास डायमंड प्लेयर भी है उसे भेज दे नेक्स्ट एक्ट में अब आप इन गेम टूर्नामेंट खेल सकते हो पता खेल लेंगे यार हमारा क्या जा रहा है सुमन शलके शलके नहीं शेख एल है आई तो नहीं है शेख स्पेलिंग चेक करो बीटीवी भाई ने बड़ी नजर रखी है चेक करो उसी को ही नहीं पता है कौन है देखो हम नजर रखते हैं पर दिखाते नहीं है किसी को हर खबर पे नजर लो भाई यहाँ पे तो कैसी वाले इतने हरामी हैं फूड पांडा से डिलीवरी नहीं देते घर की केएफसी से डायरेक्ट ऐप से कर लिया करना ऐप से भी करो नहीं देके जाते हैं वो तुझे दूर पड़ता है इसलिए अभी तेरे जो पास खुल रहा है ना उससे मिल जाएगी तेरे जो नया खुल रहा था अरे कमर्शियल कितना को दूर है मेरे घर से चप्पे पे तो है नहीं देते हमारे इधर भी नहीं देते गुजरात वाला में मुझीब लेके नहीं देते नहीं आपके एरिया में दे देते मेरे एरिया में नहीं देते मैं रात को 2 बजे तक पिज़्ज़ा हट और केएफसी से मंगवाता हूँ अगर आपके तो घर के साथ है कहाँ घर के साथ है तेरा घर ज्यादा करीब है जीटी रोड पे केएफसी है A show match already delivered, and now we're just hoping our best of 5 does the same, Bob. No, it's funny because I felt like up there when I was casting the show match, we got a little taste of what the crowd is going to deliver, but we know how much louder it's going to be once the players take the stage and once we get into that map. 3x the decibels at least. We've already देखा seen 3 so मिनट many करते करते incredible किधर matches बात here over पहुंच the गई past few weeks. So many memorable plays and clutches. Before we get into today's matchup, I wanted to ask the Des to relive a few of those top moments from throughout the tournament. So Bala, I'm coming right back to you to kick us off. What was your favorite moment from Lock-In so far? I think Just continuing with the crowd theme, right? It was when Loud beat DRX, when they took the grand final, because it was just such an electric moment. I mean, literally, as soon as RB with these shots, sorry Seth, as soon as RB with these shots, Loud took the last 2 kills.
It was crazy in here. It was just such an Warm electric like atmosphere. You could Brazil, tell everybody was so happy. It just meant so much. There's such a chance here for a Brazilian team to take the crown on their home soil. Look at that. I mean, so well deserved. The entire crowd behind them. My favorite moment of lock-in was you making Seth relive that moment. Seth, what about you? Surprisingly, it's not a DRX moment here because I'm still a little bit scarred from next VCT अगर ये पाकिस्तान में करा लाइट ही चल रहा है because it was one of the most hyped ones that we had had up until we got into the semifinals. Especially on this final map of Pearl, we're pushing 100 Thieves to the very limit. Battinho on the pen. Stellar being able to spray through the smoke, finding 2 kills to be able to get them back into this one, to be able to take this map, get into overtime, and then run. अगला वो टूर्नामेंट कराएंगे एक जनरेटर नहीं करा सकते जी बातें करते can do in the future events. An incredible series to say the least. Mimi, what'd you bring to the table for us? I want to narrow down to one specific moment. This also kind of centers around the crowd, but it was हमारे इधर बैठे हैं ना एक अस्थि वो जनरेटर भी लगाया हुआ अगले ने यूपीएस भी लगाया हुआ फिर भी again, this is साथ kind नहीं of a देता taste उसको of, I कोई think, भी what we चीज can expect today. I'm sure there will be some insane individual moments, and I'm sure that the बाजी players देख लो will be जनरेटर popping दोनों off, just चीजें kind of लगी हैं feasting in the moment of being in front of the crowd. As अगर बंदे को ना आना हो तो बहाने शो बन जाते हैं अल्लाह जाने अब ये वो कहता मेरा जनरेटर भी बंद हो गया यूपीएस भी बंद हो गया तो मुझे यार पता नहीं कौन से पिंड में रहता है पूरा दिन बत्ती नहीं अरे होती जितने ने मिलेगा क्या डोरेमोन का अब्बू ये कौन है वालेकुम अस्सलाम सेंटी 10 देंगे डोरेमोन का अब्बू भी डोरेमोन तो रोबोट है ये जय सालू तो जिसने रोबोट को बनाया उसका अब्बू ही होगा बॉस कह रहा था जल्दी देख such a close game here. It was incredible that Loud was able to come back because they started off looked incredible map 1 and 2, but DRX चल की आंखें खुलनी थी पैन चुके रिएक्शन टाइम देख यार Then we got to map number 5, we got to Ascent, and Loud, they did not crumble. चाइनीज की आंखें खुलनी थी रिएक्शन टाइम देख Tested so heavily by DRX that they can still come back, come up with new ideas, and close out a close series like that under the pressure of this insane crowd. And for a team with 2 rookies on it, essentially the 2 teams or the 2 players Click that came in, and they're the collect. guys who actually made the clutches क्या against collect Energy. करें कुछ They're the ऑप्शन guys ही who नहीं दे रहा led the तू charge again to stop DRX from coming back. It's those things that are so ऐप पे मैंने Now, कहा Achilles on the other side, John you've got कैसे Fnatic, always the bridesmaid, never the bride. Chokenatic, they've heard it all before, but this revamped squad कर here दो स्टार्ट यार a perfect run so far in Sao Paulo. Yesterday delivered a 3-0 over Navi. And this was something that we had never really anticipated. I mean, across the board on the desk, we were all expecting Navi to be able to take that. Myself, Mimi, Hypox. बंदे ने It बड़ा just felt दालम like खेला है Navi सेमीफाइनल weren't able to find their footing whatsoever. Not sure if it was an update or if it was Fnatic really just kicking them off the back of their heels. नहीं They're पता है तू कौन completely है on the ground the whole way through, whereas फिर गया यार Fnatic never really gave them much options. कौन Many डोरेमोन का chances, अब्बू 2 close maps, 1 blowout, and of course that कौन blowout was on Navi's map pick. Fnatic just looked fierce. To me, it just felt like Fnatic being incredible. That was the moment we expected them to crumble. That was the moment we expect them to fall flat. गया, And it was गया. probably one of the most dominant games that they've played इनका this सबसे season. मजे का बर्गर कौन सा लगता है तुझे I mean, Fnatic really is the EMEA super team. KFC का माइटी होता है और कौन सा होता है Predictions coming into today, I'm sure with यार इनका एक आया था माइटी एक्सट्रीम यार वो बड़े लेवल का बर्गर था बहन 2 दिन में खत्म कर दिया नहीं वो तो जिंगरेला था एक माइटी एक्सट्रीम आया था उसमें बारबेक्यू सॉस वगैरह बहुत कुछ डाला था यार वो इतना जूसी बर्गर था ना बड़ा मजे का था माइटी एक्सट्रीम नाम था 600 का था वो और बर्गर बहुत प्यारा बर्गर था यार वो जिंगरेला भी अच्छा था मैंने खाया उसमें लेकिन चीज इतनी होती है ना बंदा आके जाता है हाँ बहुत ज्यादा वो चीज है जंगली बन जाते हैं इंसान मैं सोचा था करूंगा वो तब तक चले गया यहाँ मैं था तो प्यार था मुझे माइटी से ज्यादा अच्छा इनका केंटकी नहीं है नहीं वो बहुत फर्क है बस एक टमाटर रख के दे देते हैं उसके अंदर माइटी वैसे इस टाइम 670 गया बस दुआ कर आसपास क्या रोप चल जाए क्या चला जी रोप चल जाए हमेशा की तरह सीओटी देख बंदों ने इन्हीं तो फैर मारने हैं for the first time ever, it could be an organization winning 2 in a row. Run it back. Now I'm just hoping that we get a Phoenix on one of them.
हमारे यहाँ पे गेमर को कोई जानता नहीं होता। ओहो तेरी स्क्रीन अटकी हुई है वुल्फी। ना कर। हाँ कब से मेरे ख्याल में अटकी हुई है। यार अजीब बंदे हैं। 10 मिनट चल रही है बस वो स्क्रीन अटकी हुई है बूथा तेरे मुंह सही आ रहा है तेरा लेकिन सही नहीं मुंह मतलब हिलेगा। टाइम ही नहीं मिला मुझे। चला गया था अंकल आ गए थे काम तब आया था। Two star players, two players who you really expected to have a say in this team in this year that continues, and he's just insane. He's IGLing and he's still fragging at the same time. He took the duelist roles this time. I mean, remember the turmoil that happened when everyone found out that the Loud squad that won champions wasn't. Prediction करो देखते हैं किसकी prediction सही होती है। Yep, they lost Sasi, they lost Pankata. That was two of their मैं best players. I don't care. I got these rookies. I'm gonna train them up. I'm gonna make sure that this works. And so far, it is looking. BTP भाई आप बताओ कौन जीतेगा? 2022 Loud storyline around building up that roster was we have Siddharth. नहीं फिर तो भाई आखिरी राउंड चल रहा है कहना ये जीत जाना। नहीं एक ही राउंड खत्म हो गया फिर बताऊंगा। BTP भाई कह रहे हैं मुल्तान जीतेगी। It's going to be Sadak making the calls. It's going to be Aspas looking for the duels, though. Will he pop off today? That's one of the big questions. He had a really अच्छा एक मैच नहीं देखा मैंने अभी तक PSL का पहली दफा। मैं भी नहीं देखा। तुम लोगों की जिंदगी में बहुत चीज़ों की कमी है भाई पूरी करो। मसलन आप विटामिन का मैच देखा कोई नहीं नाम तेरी जिंदगी में बड़ी कमी। इसका में विटामिन की भी कमी है। नहीं इसमें अस्तगफुरुल्लाह वाले क्या बात। यार अस्तगफुरुल्लाह से माफी मांग रहा हूँ अल्लाह ताला ना कभी सिटी में ना सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसकी जा रही है अभी तक। मेरी ना हाँ देखने में हाँ Let's move on to the other side of the match. Fnatic team. वो सबसे अलग है मीठी। रो रही बैक है Fnatic वाला। कौन सा? किसा की होगी? इतने लाल शर्ट ले जा रहे हैं सेंटिनल लग रहे हैं। ओ उसको उठा दिया शुक्र उस कमेंटेटर को। ठीक है सेंटिनल का स्कोर क्या दिखा रही हैं? हाँ जी पागल थी वो। 3-0 से इन्होंने रहा था उसे। यार ये इतना हरामी है ना ये पुराना दिखा रहे हैं ना जब सेंटिनल जीती थी। देख 3-0 से लाया हराया था इन्होंने बदला जो लिया अब इन्होंने मारी रेसिज्म सेक्सिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड रिजल्ट इन परमानेंट चैट में तो भी कह रहा हूँ उनसे गंदी बातें ना किया कर चैट में गंजे को तो देख ये तो उसका भाई लग रही है यार तू आगे जा रहा है चुप कर जा तो 2x पे चलाना तू भी मैं ट्विच पे देख रहा हूँ ये जो जैकेट वाला बंदा ये पता कौन लग रहा है मुझे IGN चैनल का वो ओनर लग रहा है मुझे वो जो स्टोरी गेम में अपलोड करता है ये तो मुझे उस 150 पिंग वाले गंजे का भाई लग रहा है जो गंजी 2 हेडफोन पहनता है crowd favorite. Then they go up and they face Navi as well. मुझे भी वही लग रहा है because that was the narrative. फुल वैसा ही है How are they going to maintain and go up against the pressure? I यूरोप सर्वर में क्या है हरामी इतनी गालियां दी है ना हमने से Let's talk though about what this Fnatic squad is doing differently than what we've seen them do before. What is their उसके मोड भी अच्छा थे पता है पाकिस्तानी है इंडियन ही है वो से गालियां बता रहे थे कहते ये क्या उन्हें which is coming up with really good ideas and having fantastic game plans. For example, you look at their fracture. They're really trying to optimize things, grabbing orbs constantly to have these really cool. ये मैच देख के मैं Fnatic का गेम प्ले हैरान हो गया था ये ओ ये देखो अच्छा है वही तो मैं कह रहा हूँ ये कॉम्बो देख के ना मैं Fnatic ये देखा बिल्डिया चेक कर दोनों कटे देख रेस को देख ये बिल्डिया देख के ना I mean, it's just another star-studded player in Durka. Somebody that you can rely on that have those pop-off moments. I mean, similar to Aspas, we have seen. ये देख गंजे को देखा है. Then when he moves over to something like the Raze, he's still gaining information for his team, but he's not. यार तू ना सीमन कर. But when he is on that jet, especially, देख तो सही गंजे को. to be respected. साहब लोग 1.7 इतनी ज़्यादा केडी होती है वैसे में. तुमने में 1.7 को कुछ समझते ही नहीं. पहले होती थी 15 की केडी जब वो चिकन का साफ होता था अब जब से वो है ना वो दूसरा चिकन पे बढ़ती नहीं तब से वहाँ की 5-6 जिसकी 6 होना मैच भी 1 केडी नहीं है वो समझी जाती क्योंकि वो 100 प्लेयर गेम है ये 5 प्लेयर गेम है
So it's time to put it all on the उसमें line. कुछ पहले 15 की बात हो रही है। अरे तू स्टीम पे देख निक्सिस कौन है? home crowd, and I know they have a lot of advantages going into this one, but I have to predict Fnatic. It seems like they are unstoppable right now. स्टीम पे देखो मौलवी साहब आया। डिस्कॉर्ड आजा चुप करके मौलवी। बड़े स्ट्रीमर हैं भाई, PUBG मोबाइल के कस्टम रूम्स कराते होते थे। Fnatic 3-1। अच्छा वो लाउड का सपोर्ट कर रहा है, सारे से ज्यादा Fnatic ही कर रहे हैं भाई। Fnatic इस दफा मुझे अपना पैसा लगा दे। बहुत पैसा लगा। किसके साथ है तू? यार दिल मेरा लाउड के साथ है, पर मुझे पता Fnatic नहीं जीतना। ये बड़ी क्या क्लेम है, बड़ी सारे लिख रहे हैं। फाइनल 5v3 होता है, ये सुबह तक जानी है स्ट्रीम अगर 2-2 मैच चले गए। आज फजर की नमाज इन्हीं के साथ पढ़ यार मतलब फिर कुछ मंगवा ही नहीं। तभी मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं तो मंगाया गया सिखा लिया, ठीक है अम्मी का बचा होगा रात को भी खा लेना जाके। ठीक है मिडनाइट डील कौन सी चल रही है? जुड़े हैं साथ में पानी। ये पहले लोग तालियां बजाते थे, इस बार देखो उनके हाथ में क्या पकड़ा दिया। क्या चीज है ये गुब्बारे पकड़ा दिए। मेरा गुब्बारे चलाओ। मुझे भी तो शौक है पकड़ने का गुब्बारे। ये तो शेप भी चेक करो, इन्होंने लंबी शेप रखी है। क्राउड में पता चले ये पहला है ना, पहला सेंटिनल जीती थी जब ये 3-0 हारे थे, और अब इन्होंने सेंटिनल मॉल की जो रोस्टिंग की है, सेंटिनल बर्बाद कर दिया इन्होंने पकड़ के। तो देना रो रही है रंगो वक्त बनता था। हाँ यार अगलों ने 2 साल बाद चुप करके आके मार के, और साहब लगाओ 18-18 मिनटों में मैच खत्म कर दिया उन्होंने, 40-40 मिनट के मैच। भाई यही तो कमबैक होता है। सेंटिनल वालों को देखो, तुरुक के परा मार दिया अब उन्होंने। अब कोई पूछता भी नहीं है सेंटिनल को। ये देना उसके कोच को, देख गिट्ठे को चेक कर जंप चल यार। मुझे भी फोन है, कह रहे हैं Fnatic का एक प्लेयर नहीं खेल रहा, आप खेल लो। मैं खेल गया ठीक। वो उठ गया और उन्होंने इसको जिंदा कर लिया, मर गया था। हमारा सुना ना ओ भाई इतने को गंजे की टेंड शाइन मारी। Esse exemplo vai ser lendário. गंजा बड़ा हरामी है। गंजा बड़ा हरामी है वाकई। गंजे ने देखी टोपी अपनी दिखा। गंजा वाकई बड़ा हरामी है। इसको फोन आया मुझे करवाने के लिए व्यूज कम आ रहे हैं यार। मिक्सिस वो कह रहे हैं, मिक्सिस का फोन आया व्यूज कम आ रहे हैं, मुजरा करो आगे। इसे मौलवी को तुझे कह रही मौलवी, तुझे में चैट नहीं पड़ी। इसको फोन आया, मुजरा करवाना है, कमा रहे। अच्छा अब समझ आई। बस मौलवी चल तू मैं दोनों चलें, कहेंगे मौलवी नाच के ज्यादा व्यूज आएंगे। कहेंगे दाढ़ी वाले मौलवी को क्या हो गया एकदम में। ओए बनियान पे आज के मौलवी अपनी बनियान पे लेके जाएगा। ओ ट्रॉफी 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 नीचे चोला पहना हो। ओए होए होए ट्रॉफी देख यार। मिक्सिस सोने की बनानी चाहिए थी यार इन्हें। सोने की ट्रॉफी है, ज्यादा बेच देना। कैसे की लगी है? मैं आया यार। हाँ तो मेरी गोदी पर जंपे मारी यार। ये सो गए थे सभी फाइनल में यार। चलो पर डीसी देखो यार, किधर है? किधर लिंक भेजो के हेलो वालेकुम सलाम मौलवी साहब। फिर कौन जीत रहा है आज? देखते हैं, अभी फिलहाल कोई पता नहीं, पहले मैच के बाद ही देखा जाएगा क्या सीन है।
फनाटिक अगर एक लाउड यार लाउड बहुत लकी रह रही है टूर्नामेंट में मुझे लकी यार बहुत प्यारा लाउड खेल रहा वो एनआरजी के खिलाफ जो उनका मैच था कसम से वो हार गए थे यार तू देख कसम से हार गए थे लेकिन तू देख लाउड ने कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ा था कोई उन्होंने गलत नहीं की वो लाउड वही तो कह रहा हूँ लाउड के ना कहते ना जिस तरह वो नहीं वो जो 2019 का वर्ल्ड कप जो था बिल्कुल वही था इनका हो रहा है जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था मैच थी जिसमें छक्के नो बॉल और वो जो टिक्कियां लगी थी तूने लाउड का वो सीन देखा था स्पाइक प्लांट में 10 मिनट रह गए थे वो 20 से आ रहा था उससे ओपन आपी हुई थी उससे शॉट नहीं लगी वही ना ये बता यार बहुत ज्यादा ये हो रही हैं लकी लेकिन ये नहीं कह रहा कि लाइक टोटली ही लकी रहे हैं लेकिन जहाँ पर ना ये नॉकआउट हो सकते थे ना हाँ उन्होंने वीक पॉइंट भी नहीं दिया अपना कोई हाँ ये चीज मैं मान रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक दे बीन लकी द होल टूर्नामेंट बट माय पॉइंट इज दैट जहाँ पर वो हार सकते थे ना जहाँ पे नॉकआउट हो सकते थे वहाँ पर इनका किस्मत ने बड़ा साथ दिया यार ये जो आसपास की ओपनिंग है ना ये इनको बहुत बचा जाती है बहुत कुत्ते का बच्चा है हाँ इसकी ओपनिंग बहुत बचा जाती है इनको मैंने तो भाई मैच देखना है आसपास और डरका का मैंने खुद यही चीज देख लिया मेन चीज ही वही है और तू इधर स्ट्रीम नहीं कर रहा स्क्वाड पे करोगे कर दे तो एक ही जगह स्ट्रीम करो फिर सारे मतलब उस पे देखें ना इस तरह फिर एक का आगे रहेगा एक का पीछे रहेगा ये लो पीछे मेरी स्ट्रीम भी लाओ जा आगे सारे टड्डी बेर उठा रहा है वो अपने कुत्ते उठा रहा है तो सबसे ज्यादा जो बैलेंस दिया ना सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो इस क्रॉनिकल्स ने दिया ब्राजील में मैच हो रहा सारे लाउड के सपोर्टर आए फनेटिक यही तो रोल तभी मैं जाता हूं यहाँ मैं तब मेरी मुझे लाउड से कोई वो नहीं है पिछला मैच भी मतलब पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था वो भी लाउड जीती थी ठीक है तो उस मुझे मेरा लाउड के खिलाफ कोई ऐसा नहीं है यार तो यही है तब ऑप्टिक में था कि लाउड में था वो उसमें था ऑप्टिक ये नहीं उसको ऑप्टिक में था ना हाँ वो लाउड वर्सेस ऑप्टिक हुआ था मुझे याद है वो जो ब्रीज में आसपास की ऑप जितवा गई थी उनको हाँ यार मैंने ना लाइक वेलो में जितने भी मैचेस देखे हैं ना उनमें 2 मैचेस लाइक यादगार हैं एक तो वो था जो हुआ था टीम लिक्विड का उनके साथ जो उसका गार्ड का नया नाम क्या था G3 क्या नाम है G2 नहीं G2 नहीं G3 G क्या नाम है जो गार्ड का नया नाम था G2 ही था शायद G2 है यार अबे नहीं G2 अलग टीम है वो अलग टीम है गार्ड जो पॉइंट मैच था वो तो नहीं हाँ वो जो क्वालिफाइंग मैच था आइस बॉक्स के लिए था हाँ नहीं टर्की के लिए जो था टर्किश तो नहीं था उसका ना जो था ना क्वालिफाइंग मैच उसमें स्क्रीम ने 2 से 3 मैच में 30 बॉम्ब मारा बड़ा प्यारा मैच तकरीबन जो पहला मैच बाइंड था दूसरा स्प्लिट था जिसमें एसपी मारे थे स्प्लिट दूसरा एसेंट था तीसरा वो था ब्रीज चलो ये तो देखो Fnatic has played in front of big crowds before, but this is something different. This crowd does not want them to. सारे देख लो यार ये वो वही ना इनको बड़ा वो मिला हुआ है मतलब एज मिला हुआ है ना और अगर वो हो गया क्या नाम है यहाँ पे लाउड हार गई तो क्या बनेगा मैं तो जाती ही हूँ लाउड हारे भाई लाउड मुझे लाइक वही तो कह रहा हूँ आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट एनी ऑफ देम बट द पॉइंट इज दैट आई जस्ट जितनी वैसे वो फनेटिक ने मेहनत किया ना और कॉम्बोज बनाया बनता यही है फनेटिक यही बात है यार तुझे पता है लाइक फनेटिक के सबसे बड़ा जो था ना मैं इनको जो फॉलो कर रहा हूँ ना और लाइक जो मुझे इनमें सबसे ज्यादा मिली थी वो थी बोस्टर की आपको बोस्टर नहीं है हाँ उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया अगर बस आते ही पागल हो जाते उसका ना मतलब ठीक वाइज वाज वेरी गुड बात कौन जो था वो इतना क्रैश था लेकिन अगर तुम उसके पैसे था ना बोस्टर की कंट्रीब्यूशन है वो ला बाकी मैं आया एक कॉल कर for Fnatic hurl out for the side of Loud. We head to Ascend as our first pick here. Loud, this is interesting to see them choosing into this one so early into the series. I almost expect them to maybe try and show something special on the low, something they had cooked up, but not to be. Fnatic go fracture the second. Oh yeah, they do. I mean, just fresh off a victory. This was the final map of the series just yesterday versus Na'Vi. Granted, it was a little bit closer. 13-11, they were able to get that win. They're still feeling confident in the fracture pick, and split now could be coming through as well for Loud.
That one's a weird one for me. Split is a double duelist for both sides, and I really don't know how those compositions go up against each other because you put so much into your stars. So that's one that I think could go either way. Lotus here, we haven't seen Loud play it yet. Fnatic, we had a chance to see it yesterday against Navi. It looked pretty solid. It did. There's big question about what Loud wants to play. Their map number 5, we will land on Icebox. Fnatic, historically one of their best maps, but here at this tournament, we've seen Loud come out with that Harbor composition and look fantastic there. I think Fnatic is super happy that, even though Icebox has historically been one of their best, this is the place where they have Harbor Viper. This is the place where Loud can lean into the strengths that they've been working on all tournament long. So we start with Ascent where they get that Viper, but we still don't get that Harbor. It's a little weird because, like I said, they're getting out of Pearl. Loud has been using that to their advantage the entire time. And I love this Viper composition we saw from Loud last time. The ideas they had combining the snake bite with other utility, it was fantastic. But Fnatic has seen it now. Map 1, Ascent, Prime Gaming Agent Select. Let's see what the team map laga Ascent map laga and that's why I'm curious to see if they continue to run it. We'll find out in a moment here as we get ready to go into Sonic's pick. And yes, they are going to be sticking through with this. I thought maybe they would change it up. Yeah. Swap, but no, they're sticking through. क्या क्या लिया इन्होंने डेका क्रॉनिकल्स बूस्टर ओके लाउड डबल स्मोकर जा रहा है डबल कंट्रोलर लाउडनेस वो भी नहीं लिया क्यों अच्छा मतलब एक टीम ज्यादा इनिशिएटिंग की तरफ चलेगी और एक टीम ज्यादा कंट्रोल की तरफ चलेगी ओके फनाटिक बड़ा अग्रेसिव हो गया है अगर तू नोटिस करे यार उनकी जो वो डबल खेल रहे हैं ना प्लेयर मुझे बात याद आ गई और तूने वो मैच देखा था वो टीम लिक्विड और टीएक्स वाला ये जो पीछे हुआ है ये जो हाँ भी टीम लिक्विड देखे तो मैंने सारे मैच है टीम लिक्विड में स्क्रीम तो नहीं था इसमें बट नहीं वो तो कार्बन का ऑफ में चला गया ना जब टीम लिक्विड का टीम में था ना नाम यार उनका तुमने आइस बॉक्स देखा था लाइक उन्होंने कसम से इतना गंदे स्टैट्स मैंने जिंदगी में कभी किसी टीम के नहीं देखे जितने उन्होंने लगाए लाइक दे वर स्ट्रेट 10-0 आई बिलीव इतना जबरदस्त उन्होंने पकड़ा था ना उनको टीम लिक्विड भाई मुझे यार But at the end of this match, we will have somebody, either Chronicle on the side of Fnatic or that Loud. तेरी लाइव पीछे है काफी रुक जा जरा मैं लाइव करता हूँ तू किधर लाइव देख रहा है तू लाइव किधर देख रहा है ट्विच पे हाँ मैं ट्विच पे नहीं यूट्यूब पे पीछे रहती है रोज छोड़ दे यूट्यूब पे ना कर ट्विच पे कर दोबारा ऑन कर लेता हूँ रिफ्रेश कर लिया हो जाएगी वो मेरी रीलोड हो रही थी ना तब वो लग गया मैच चल आ दिया डर का भाई इस बंदे का बस है बंदे की टेंट पे कसम से टीम ने स्नैप कराई है ना पहले तो नहीं होती थी ना इसकी वही ना इसने बाल अपने उड़ा के गेम लिया अटैक कर गए ये हमेशा यही अटैक करते हैं हमेशा यही अटैक करते हैं साइड खाली है कोई भी नहीं है साइड में नहीं वो बहुत शॉट वो देख अबे नाइस यार तब गैरत देख They're not उसका पूरा वो था कि उसके वहाँ से पीक होगी और वहीं पे उसने ना लगाया था. The plant is going down. They like to be very structured. Make sure there's nobody tree. Clear out anybody that could be backstabbing. And they're going to realize here that all 5 players are towards side and A main. So peace of mind towards Cat. Chill होके खेल रहे हैं. Oh nice. Up the top. Can't detonate it though. Suppressed. Fragment Nay going to be clearing a part of that one and now here comes the nervous इतना हो जाए यार. वो लेके दो बहुत आला. ओ बहुत आला डरने आसपास मार दी बहुत. Laying claim to the map. Laying claim to the site. It's all down to this. अबे flawless करो. With the most ado. कितना बगा रहा था वो तो कितना ये हर चीज में पंगे लेता है ये हर चीज में पंगे लेता है. अबे ये कॉन्फिडेंस दिखाता है ये चीज होती है भाई फाइनल तुम खेल रहे हो पहले राउंड में नाइफ करवा रहे हो बहुत आला. ये थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है अभी आपका स्टार्ट में आगे ये क्या करने लग जाओ हार जाओ फिर क्या ओहो ये चीज अगली टीम वो करती है ना कि मतलब फैंसी इतना चिल होके खेल रहा है अगला बंदा. हां ये तो मतलब अगर तुम्हें पता हो ना कि अगर तुम्हारी कोई मूव से अगला टिल्ट होगा तो तुम डेफिनेटली वो चीज करोगे. ये गेम होती है ना इसमें यू हैव टू जस्ट होल्ड योर नर्व्स. ये वैल्यू आई बहन की सारी गेम ये इसने बाल सफेद कर दिए हैं. वही तो ये जो चैट पे भी करते हैं ना ट्रिगर कई बंदे का फार्मूला होता है शुरू में ट्रिगर करने लग जाते हैं दूसरी टीम. हां मैं तो देखता ही नहीं. And the trophy now is within touching distance, but like I said, डर का मेरा चीता. पीछे देख. It's going to be लाउड की बात. nice one today. Oh nice. Oh ले गए. पिक नहीं दी जेट ने. बहुत आला यार. अच्छा वो ले गया.
bounces onto his face. Might have been friendly fire, but okay, Aspas completely separated from डर the का rest ले of his गया team एक और now. लाउड It's getting a गैस को little ले bit गया awkward still. क्रॉनिकल्स 1 HP है आसपास रेकर को ले गया This guy can make short work of many targets. नहीं ये अच्छा खेलता है को जा रहा है हाँ ये ऑफ खेलता है बड़ी प्यारी एज फेयर बहुत यार क्रॉनिकल्स मुझे सबसे अच्छा लगता है मैं एक डायरेक्ट डर का क्रॉनिकल्स वो सिर्फ अच्छा लेकिन मैन सी क्रॉनिकल्स बहुत कबड्डी प्यारी हुआ है इसका भी मुझे इन सारों में ना इन सारों में सबसे अच्छे जो मैकेनिक्स है ना वो क्रॉनिकल्स के हैं ये इको अच्छा लेके जा रहे हैं अभी तक तो खैर लेकिन हार जाएंगे 1-1 और साइड भी होल्ड्स की हुई हैं सही Alfie has missed it. Turned around. Yep, no timing is missed. Alfie none the wiser. Contact is the name of the game. वो नेट भी ले गया उसको अंडर बैठ है नहीं ये गंदा ये काम खराब बहुत आला यार नाइस ले गया teammates helping him. बहुत आला चेक नहीं किया ना वो अगर चेक कर लेता ना Spike in his hands with 6 seconds remaining. Absolutely. But no. Scurries away, tail between his legs. भाई इकोनॉमी बहुत अच्छी It's that round win that he was hunting for. रुक भी गया नाइस What a difference. Boaster immediately forced to make an about face on his mentality from round 1. अगर ये वहाँ पे चेक कर लेते ना कुछ बन जाता शायद लेकिन फिर भी मरते अगर चेक करने भी लाउड का 21 रिकॉर्ड है ऐसे नहीं with his dignity intact. All time. Look at that record all time from Loud. किस मैचों में I said ये no रिकॉर्ड teams भी won 2 titles, but Loud are different. They've only ever lost to 2 पहला squads. ये है The old स्प्लिट crew, भी the लाउड current का energy core. नहीं पता They've only lost 4 series ever. 34-4 the record. Here comes Durka कितना अग्रेसिव जा रही है Crunch play, but no one to receive. यही होता है भाई ये फैनेटिक की नहीं अप्रोच एग्रेसिव है अच्छी जी पहले मैंने फैनेटिक को खेलता था अंडर होगा 100%. ओ नाइस यार बहुत आला Close and personal, just the way he likes it. But a trade बहुत आला device, यार that's going to be the return of fire. And do they want to try and get aggressive? उसने अपना पैर ना ज़ाया कर दिया Look likely. Paranoia might have set something up, a bit of spam प्रेशर now. कितना होता है यार इस गेम पे है Equal damage exchange on both parts. नहीं होता इस तरह नहीं होता लाइक ये बहुत वो होते हैं बिकॉज़ इनको इस चीज की भी ट्रेनिंग दी होती है प्रेशर हैंडल करने की स्ट्रेस हैंडल करने की फुल ट्रेनिंग हम जो कर जाते हैं ना हम लोग बड़े मैचेस में जो मेरा भी इमोर्टल होने वाला है 50 वो ले गया Anchoring to positions, Kawazine unknown. Did not know where the players were coming from still. Doubled up in hell. Here comes Les. नाइस Just demonic. तो पता मेरा भी इमोर्टल होने लगा जबरदस्त तेरे पास कोई अकाउंट पड़ा है एसेंडेंट का है उसका तो मुझे बताइए कि खेलेंगे एसेंडेंट मैं खुद हूं एसेंडेंट 3 तो एसेंडेंट 1 या डायमंड 3 का होता है मुझे बताइए That is not a bonus in round 3. Look at him coming through the pinch. I love what Boaster does on these retakes, the way that he always is teleporting into the smoke. But that means that he's not there to watch the pinch coming through the backstab, the lurk play. Les is good for it, and that applies pressure early. Fnatic drop down. यार ये 5 मैच नहीं होंगे इसमें 5 होंगे ना Coming back to bite them. है हां 5-5 है फाइनल 5 है फाइनल सेमीफाइनल दोनों 5-5 यार सो ये एक मैच में इतना स्टैमिना चाहिए होता है ठीक है और सो 5 खेलने हो यार क्या बंदे की मत मारी जाती है भाई यही तो लाइक दिस इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल ना कि एक तो आपकी मेंटालिटी का भी सारा स्टैट्स एंड ऑल स्टैमिना बहुत फर्क वही होता है अच्छा ये सारी इकोनॉमी पर है तकरीबन Loud love to put a focus on these A side hits. They're very drilled. Aspas का डिफेंड है Even when Aspas didn't perform his best, their attacking protocols and the set plays, the teamwork, it's all really good. It's their bread and butter. Look at this. Nice. The players just funneling onto the one side of the site. They always have multiple players facing. It's very difficult to anchor the A side against them because when you swing from Dice or Generator, you're going to be facing 2-3 players from Loud, all just slowly getting into the site and watching for you. उसको सही भेजो ओ ना यार Oh my goodness, shot's going a little bit wide. Nice fam. One more position. Oh nice. ओ दो ले गया वो वहां से Double spray. यार Tries to pick up a bit of an upgrade. 3 ले गया है. My goodness, it gets hairy, but सही कोने में दया कर रहा है save hands from Sadak. ये कोने में भी दया ये देख खुद ही कितने टॉप 13 को देख के इनके क्राउड को ना मुझे क्योंकि यार तू सोच अब तू गेमिंग में पैसा लगा के दूसरे मुल्क थोड़ी ना मैच देखने जाएगा
गेमिंग में का इतना थोड़ी होता है गेमर क्रिकेट मैच चलो यार ये होता अबे तुझे पता है हमारी कंट्री में इस तरह इतना होता है इशू लाइक बाहर की कंट्रीज में यू जस्ट हैव टू स्पेंड जस्ट यू नो मे बी अ वीक ऑफ योर इनकम दैट्स ऑल या तो फिर भी देख ले ब्राजील में फनाटिक की इतनी कोई नजर ही नहीं आई अब नहीं जब इंडिया की ग्लोबल ई-स्पोर्ट खेल रही थी उसमें एक बंदा भी नहीं आया था इंडिया का बस वही आई थी जो टीम के साथ बंदे नहीं आते वही देख रहे थे बैठे हुए क्राउड में बस नहीं तेरा पॉइंट मैं वैलिड है बिल्कुल समझ रहा हूँ लेकिन लाइक जो जिन कंट्रीज के वीजा और पासपोर्ट वगैरह स्ट्रांग है ना दे जस्ट हैव टू स्पेंड एन अर्निंग ऑफ अ वीक दैट्स ऑल इतना ही होता है हां तारिक भी तो गया टाइम भी जाए कैडी वो तो पहले ही देखने गए हुए थे मैच ये देखिए देख लियो ले गया बहुत अला ए तू वो कर पीछे हो या मुझे मेरी स्ट्रीम देख ओ ले गया तू मेरी स्ट्रीम देख या पीछे हो To try and take that market position. पीछे हो गया Loud wondering what's going on and Leo goes for it. Okay, Hunter's Fury up close and a flash play. What is that? Fnatic cooking up plays out of nowhere. Incredible. कह नहीं सकते अभी कोई जीतेगा orthodox position to ult from, but that's नहीं Fnatic ले लेगी isn't it? आसपास का सारा बहुत कम है एक इन बुलेट है Now the pressure. इनके पास वैसे इनका वो आ जाएगा क्या नाम है इकोनॉमी Barely any health between them. Spike in hand, that's about the only saving grace. What is going on there? Nice. The players are low still. Leo just not quite ready for it. यार ये क्या किया है फिर भी निकल सकता है अभी Focus on what's going on. अभी फ्लैटी निकाल सकता है ले सकता है ले लेगा This time will not be caught unaware. Great stuff. Very diligent. और डरका की ना वो सारी गलत हो गई थी ना शुरू में They were throwing those out many times in the semi-final against Na'Vi. डैश में इसका दीवार में लग गया But on Fracture we saw such awesome set coordinated aggression. This बहुत team has now शक्लें देखने का मजा आता all है of that इसको देख लड़की लग रही लियो excellence from Boaster, from Mini, and added to it the intuition. इनका इकोनॉमी आ जाती है सूला तो It's a dangerous mix. It's working so well for them at this tournament. इकोनॉमी नहीं फनाटिक कहाँ की टीम है फनाटिक अमेरिका अमेरिका से ही है ना नहीं फनाटिक ईएमई की है ईएमई की है ना सॉरी अमेरिका की लाउड है ब्राजील की लाउड है और लाइक ईएमई है मुझे लगता है बहुत बुरा सर्वर है लेकिन चलो कोई नहीं They're going to end A frequently. Mid control, A splits, A bursts. They always have enjoyed that side of the map. Feels to me like that's where Sadak is the most comfortable. अब तो 3-4 क्रॉस एयर ही है जो चल रहे हैं वेलो में एक ये डॉट और एक ये प्लस वाला और एक डबल वाला और एक सुना वाला बहुत कुछ कोई चला लेते हैं डॉट वो चलता है डॉट वाकई वो चलते हैं और एक प्लस वाला पूरा चलता है डॉट धोखा नहीं देता पर स्प्रे पे तंग करता है Tries to go for a bite of the apple, but he's pushed back nevertheless. Now we see it. Viper's pit drop down. अल देख उसकी कहां से कहां तक लगी है वाइपर टेप गलत है ना We saw DRX getting अल्ट देख यार कितनी प्यारी लगी हुई है Fnatic are not going to be deterred. They will try and take this one. Jumping down. डर का ही है जो ले जाएगा Up top. ओए टॉप पे चढ़ Claims the first. That jet head to head. वो लेगी शाबाश Tuiz has ulted behind them, and the spike is not inside the pit. But it is chaos. It's anyone's game right now. वो देखो ओडिन चल गई ना अगर उसकी ओह नाइस unaware of any sort of players in his sight lines. The pit drop down 2 to 2. डिफ्यूज कर रहा है ओ उसने नेड अच्छा मारा ओ लिया जाएगा नाइस यार What is that? 3 in a round and he नेड लग गया था वैसे It's more than safe. अबे लियो बहुत जबरदस्त खेल रहा है यार He's unbelievable. This 19-year-old player, 14-4 है 11-4 यार has just made such a difference to this squad. He's their best player. He's the best player in this tournament from Fnatic. And that is a very, very tough bar. Less future. When you're playing it with players like Durka, Alpia, Chronicle. Such a position to get really. 11 and 4 currently. ये कितने काम होते हैं कोई वो रिएक्शन ही नहीं चिल मॉल है 35% clutch rate in the tournament, by the way. Ridiculous. Almost unheard of. और डरका का डैश है And what is the answer? अबे डरका ने बड़ी कर जगह पकड़ ली है लेकिन उन्हें पता है इधर को होगा ये 100% ये चेक करता है का एंड टाइम पे उसका ये मिल गया पता तुझे एंड टाइम पे जब Chronicle, bit of a bailout. Nice.
ओडिन क्या गया सिपिक अबे क्या वैसे कौन सी हीरो है वही ना ओडिन क्या गया अबे लियो वो डाला अबे डिफेंड आना लाउड का तू सबर कर गया अबे यार क्या गेम कर गए हैं देखो अंदर ही खड़ा वो मार देगा भाई इसके अंदर गया ये पकड़ा गया अब पकड़ा गया बहुत अच्छा यार लियो बहुत प्यारा खेल कभी क्रॉनिकल ने क्या ओडिन मारी है भाई running a lot of 4-1 executes, those darts get really good value. And so far too, we've just seen fantastic coordination between, especially, I want to time out ले लिया Loud ने time out ले लिया वे point out, Bren, the two new players on Fnatic. The Hunter's Fury and the Flash, that's Leo, that's Chronicle. That's not the core players on Fnatic. This round too, the Shock Dart to cancel the Trailblazer and then Chronicle spraying everybody down with the Odin. Those are the two new guys. And when I looked at this Fnatic squad, and to be honest, the Loud squad too, I thought both teams would need more time to win a trophy. Because each team had made 2 roster moves in the off-season. But I've spoken at length about Leo. Chronicle, though, I want to wax lyrical for a second about this guy because he has been so close to winning 2 trophies before. He was widely regarded as the best player in the world at the end of 2021 when he won Berlin and almost took champions in the same year. But his 2022 season was just miserable. He got denied that LAN by 2 milliseconds, if you remember that game. Dreams crushed under the weight of political forces out of his control. टाइम आउट ले लिया लाउड ने वे दोनों टाइम आउट ले लिए लाउड ने ये क्या चक्कर है एक लिया भाई अभी इधर 2 डाउट है अच्छा 3 टाइम आउट ले सकते हो सेमीफाइनल और फाइनल में वैसे 2 होते हैं अल्ड आ गया केजे की इन्होंने अल्ड तोड़ने का बंदोबस्त पहले ही किया होगा है ना पता है early presence. S'mores a similar approach. Loud, they do this time and time again. If you've been watching their games, they love to play heavy and hard here for this game. उधर को पे चला गया. Nice. Suppression onto Kawanzin. आसपास की भी They're normally going to follow the Trailblazer if they do hit A. आसपास तो बहुत तेज खेलता है भाई आप. So that's going to keep 3 बहुत सारी reaction time की गेम है. Durka's operator doesn't really have a great way of being cleared. डर के नहीं करना है थोड़ा उधर जंप ही को नहीं है यार वो तो होना ही होना फ्लैश डॉग शॉट और मिस कर दिया ओ पैन ले गई ओ ले गया यार ओ नाइस शॉट वो बे बूस्टर अबे डर के वो हुआ था स्पैम में एक ले गया ये देख वर्ल्ड करके निकल गया teleports behind them. That's with the jump peek, he knows. Mindset लगाया उसने. दस्ती quick. Kawazin's alone on the side planning. को पता है उधर है वो भी पीक नहीं दे रहा देख कितना हरामी है यार. स्नैड भी लगा दिया ये देख. अल लगा. यहाँ पे वो मॉली मारेगा. Heavy positioning known. Heavy commitment of an ultimate. बूस्टर बहुत कुछ है भाई. To break the economy again of Loud. Look at the layers of smoke. ले गया बूस्टर बहुत बगैरत है. उससे जो अल्ट किया ना उधर जो होल्ड किया पेशेंस दिखाया वही जितवा गया भाई उसने पीक ही नहीं किया और देख डर के ने कितना ये पहली शॉट मिस होने के बाद भी उसे दूसरी शॉट निकाल गया वहां से उधर स्मोक क्यों नहीं था यार उस एंगल पे तो स्मोक होता है ना देख ये देख बॉस्टन ने जो थ्रू मारा है वो 2 शॉट लिए उसने वाइपर के भी लिए वहां से ये तो स्मोक क्यों नहीं था मेन तो ये बात खराब हुई है ना जो स्मोक होता है 2 पिक जाती ना उसने अपने एंगल के लिए आते मेन स्मोक ही नहीं थे यार उनके पास वो थी ना स्काई थी ना वो रिस्क नहीं ले रहे थे ना क्योंकि स्काई थ्रू द स्मोक फ्लैश करके घुस सकती थी ना Now emphasis placed. Look at this. Durka wants to take the fight straight down mid. Now this is harder because he's going to smoke mid rush guaranteed. Indeed he does. Loud not messing around. Booster बहुत आला है weapons. And here we go. Anything but patient. It's fast. It's rapid.
They want to take control of this. टीपियां देख बूस्टर की टीपी देख Cuts across the angle. There's a smoke in his way, and they are none the wiser. Loud. Silenced here. रमी यार तूने उसकी वो टीपी देखी है मुझे वहां से उधर लगा गया है यार तू उसकी वो टीपी देख किसी को नजर ही नहीं आई वो टीपी उसकी यार परफेक्ट थी यार बहुत प्यारी टीपी मारी है उसने यार इनको 3 राउंड और चाहिए लाउड Nobody ever beats them on this map. उसने अपने लिए स्मोक भी उस टाइप का किया तो चेक कर रहा है वही ना स्मोक करके एंड दे दो हाँ यार बहुत प्यारा काम has just kept building. काम कर गया उसका प्लान Everybody else looks so much better too. 3 तो ले गया आराम से Louder steadily running out of room here in this first half. 1 राउंड या 2 राउंड और चाहिए यार लाउड को जीतने के लिए Between them and the end of this. And their defense side is very good. Their defense side is अबे यार 20-1 का रिकॉर्ड है और अगले देख कितना पकड़ने हैं पूरी प्लानिंग के साथ है ये एक दूसरे के मैच देखते हैं भाई मैच खेलने से पहले उन्हें स्टैट्स पूरी चेक करते हैं आपको हर मैच बदलते हैं हां जी यार बूस्टर भाई बहुत प्यारा खेल है यार हर प्लेयर ने हर गेम प्ले के साथ राउंड निकाल दिए उनको पता है वो फनेटिक है फनेटिक अब जितने भी राउंड लेगी वो लीड पर लेगी क्योंकि 7-2 तो वैसे ही है I think something like that might be a good idea though. From Loud's perspective, they need to break ये down. कुछ भी नहीं कर रहे उनको पता है Protocols by Fnatic. बहुत बहुत है वो तो किधर चढ़ा हुआ है ब्रो देखो देख आसपास कोई गोली कर गया ये वाह हीलर है और वो तो गई शील्ड Knows that there could have been a player pushing up behind it still. He'll can be active now, the Seekers. One after another layer in that util. Nice. Nice shot. Nice फाइनल और लियो देगा Lovely job done. ओ यार तो टॉप पे आ गया वो देख वो वो नहीं होता अटैकर में ली प्लेयर वो लग रही ले गया ना and he's making it so damn hard still the jiggle with the movement out the air traded down to Chronicle and how does he want to play this in a 1v3 Odin लगा हुआ अगला Odin's not ideal for it money in his back pocket could play this if he wants to but so many angles watched and बहुत प्यारा पुश किया था उन्होंने बहुत प्यारा पुश किया था वो जो पेशेंस दिखा के अल्ट किया ना उसके स्मोक के बाद यार अगर वो वही ना आसपास मर जाता ना बॉस क्योंकि आसपास लिटरली 1 एचपी था इशादक ने सारा गेम निकाला है प्रेशिप देख उसका Throwing in a little curveball there is excellent. कोच की बात ही निकाल उनकी इकॉनमी बहुत जबरदस्त है ना And now you can hit them with some kind of fast A hit or an A split. उन्होंने आप क्यों नहीं दी किसने And if you manage to get 4 on the board यार वो क्या नाम है आसपास जब भी एंट्री कराने लगता है अब छोड़ देता है अपनी खेलता टैकिंग पे नहीं खेलता मेरे जैसे मैं भी नहीं खेलता टैकिंग में कभी टीम बढ़ती नहीं है आपको बहुत प्रेशर होता है बहुत हां और टीम चढ़ती नहीं है वो जाती नहीं उनको अंडर देखिए देख ओ अनलकी ओ समझ के लगा ओ नाइस डॉग यार लाउड भी अच्छा खेल रही है यार इतना बुरा नहीं खेल रही अबे बेंचली 20-1 का रिकॉर्ड है दे हैव टू नो होल्ड दैट ट्रैप एज वेल इसका डिफेंड बहुत जालिम है तू भी डिफेंड तू आने दे अभी ओपिंग आने दे जेट की तू देखी ये देख फ्लैश साल मैं क्या तो प्यारी एंड बेहतरीन ये देख ये बहुत जालिम मैच होने आज यार आप लगा लिया आज बहुत प्यारे मैच होने वन साइडेड गेम नहीं जा रही है अभी भी वही तो वन साइडेड गेम हो जाएगी वन साइडेड नहीं जा रही नहीं वन साइड जाती है पागल है वन साइडेड जा ही नहीं सकती हां फाइनल है दोनों बेस्ट टीम में आई हुई है ऊपर वन साइडेड गेम का कोई सीन ही नहीं है भैया all the rest is excellent from Loud sending that flash in and dealing with Leo who's normally good for one in that situation उसके साथ वो सही सीन हो गया स्मोक खत्म हो गया the awareness to know that off Leo's contact Durka's going to updraft and go for some kind of knife play. Lefty. That's an excellent idea from Fnatic. And Loud वाले पागल हुए वे देख पूरा क्राउड एक राउंड जीते मैच जीती आते ने रिश्ता हो गया अपना. Yeah. 5 rounds on Ascent attack.
इकोनॉमी अच्छी है दोनों टीम की। Look how difficult it is for Durka to be able to get any space in mid or B. खा लेगा एक शॉट निकाल लेगा। ओह नाइस निकाल लेगा देखा मैंने एक शॉट निकला क्लियर एंगल पकड़ा हुआ उसने उसको क्या है एक शॉट निकलनी है वो भी ले गया वो अल्ट भी ले गया सो वो ले गया ओए अंदर लियो ले आया आसपास वो भी ले गया ओए बच गया वो गया नेट से चला गया 8 बहुत डाला नाइस यार नाइस सब मजा आएगा पिस्टल राउंड चाहिए आसपास को पिस्टल राउंड चाहिए बस लियो Is that a bit of an overheat from Leo perhaps? एक पिस्टल राउंड चाहिए हैं कि नहीं अच्छा पिस्टल राउंड या गेम बहुत फंस जाएगी लियो ने बहुत प्यारा खेला बहुत प्यारा खेला अबे डरके ने बहुत यार ये देख ना इनके पास स्काई थी इनको यहां पे डॉग करना है नहीं वो आगे वाले से करते हैं अगले एंगल से करते हैं तो गलत है ना हाँ बस ये करना चाहिए क्योंकि जेट की पीक होती है यहाँ से हमेशा आगे जाके कभी इधर होके डॉग करना चाहिए था सही बात है गलत है ना देखो उस एक गलती तो होता है कि एक गलती आपको पूरा राउंड खाली कर देती है सबसे अंडर है आसपास सबसे अंडर अभी सबसे ऊपर आएगा देखिए Thank you very much, Brent and Saisho. I'm joined by Buzz from. ओए इसके साथ बहुत बुरी हुई है यार इसके साथ आसपास तो बहुत बुरी की है सेमीफाइनल में हर राउंड जेट डिफ किया है हर राउंड जेट डिफ किया उसने तो ऑफ से जो मारा था हां their weakness because they play with the two smoke storm so the attack of two smoke is not really good but Fnatic really played well they retake well and everything was good. I don't know how it's going to be in defense, but the Viper is one of the strongest agents in defense. So I don't know how it's going to be, but I don't know. Yeah, Loud could win this. I think. Oh well, obviously you played against Loud already and in front of a crowd that was very similar. They were not cheering for you; they were cheering for the other team. तूने नया एजेंट देखा अभी जो दिखा रहा है हाँ उसकी पोकेमॉन वाली बिल्ड है सारे एजेंट पोकेमॉन लगते हैं Honestly, I really enjoyed a lot with the Fraudulent crowd, even though they are not supporting us. But it was a really good experience and it was really funny. Even though we lost, I also enjoyed so much. But I think the Fnatic players, they enjoying as well. So I don't worry about them. How difficult is it, do you think, to just ignore the crowd? Like, what did you do? वो भी सारे यही बात कर रहे हैं कि सारा crowd loud की तरफ है तुम लोग ignore कैसे करें? Even they are not supporting us, but I okay, they're supporting us. Oh, you gotta pretend. You gotta pretend. Yeah. Well, you guys heard it from Buzz here. He thinks Loud they have a chance in the second half as they move to their defense. Bren and Saisho, I'm gonna throw this back to you. It's always been their stronger side. Now Loud going to be in comfortable territory as we look towards that second half of map 1 in our grand finals here in Sao Paulo. ब्रेक चला गया वो देख हमने बालूका से जाके रखे हुए आसपास में लो पे स्टार्ट uses these snake टाइम आउट यूज ही नहीं हुए यार तू कह रहा यूज हुआ हुआ ना वो दे 3 डॉट आ रहे हैं ऊपर Fnatic are yet to drop a map at lock-in. They have been perfect so far. We'll see how the pistol goes. यार मुझे लग रहा है Fnatic अमेरिकन और लाउड EME है की है तो नहीं लगता Fnatic met their match. Brave from Aspas. He almost looked like he wanted to take the fight to them. But no. Dodges around, plays around their own Viper orb. And it's a strange setup here actually from Loud. They only used this Viper wall a single time in the game against DRX. And they ended up losing that round. Obviously quite difficult to get through though, if it is an A split. मिड जाएंगे मिड कंट्रोल पता है इससे इनका मिड कंट्रोल ले लो बहुत फायदा होता है मिड कंट्रोल पे जाते हैं सारे Potential trap play less. यार ओके ओ ले गया उस You're going to be taking contact, release the turret. There's going to be a flash on the backside of this one. Turret sees it, flash play, and it's a double swing. Nice. Loud, GG. A brand new play that Loud bring out for the pistol round. Snakebite relieves that. No. Nice. Oh, that's an important fight to win. He's still here. He's still oh, nice! Booster! Oh, no, He's still alive. He's still kicking.
नाइस 2v2 यार बूस्टर ने निकाल गया अगर ये राउंड निकला तो बूस्टर की वजह से तुमने उसका नाइफ देखा They don't have control of the back of the site. They don't know if anyone's here. That's why they're trying to clear it. Still seem to be a little bit more comfortable now. Sadak's so low. 2v3 है मैंने वाइपर की तो एचपी देखी नहीं 1 एचपी वाइपर भी है और नाइस यार जीजी लाउड Maybe a little bit too overexcited there. Alpha here. How much can you do? Viper Spear around the side. Flash blocks. Paranoid. Oh nice. उधर देख उस साइड पे फ्लैश दिया उस साइड पे पैरानॉर्मल दे दिया तू चेक कर रहा है थोड़े कॉल्स और जेट बन क्या है हेल दे रहा है How does Loud recover that? बूस्टर को डाल रहा है तो आगे क्या करने की है An insane trap play off the rip to make it a 5v3. वो जो वाइपर जो नाइफ कर किया ना ये देख उससे किल जो है ना पीक ही नहीं दिया ये क्या चक्कर हुआ लियो को गुस्सा चढ़ गया मैं नाइफ हो गया यार Leo's left rattled. Boaster should have done enough to equalize. But that is an absurd round. बूस्टर का लेता था ना उसको And Louder back to their classic defensive Viper setup manage here. The Killjoy utility will pivot from A to B. But you see the Viper wall used for flood retaking, set retaking over on the B side. And these snake bites, very difficult to get through. That's brutal. What are you going to do? Disrespect it? Sadak is up close, holding the angle. Backs away though, just in case there was any sort of presence. And the whole reason that Sadak is close there is to check and see if Boaster has TP'd across. Dark Flash reclearance. This setup though from Loud doesn't have a great ability to retake A main in the mid round. There's no KO there to be able to reflash it. So now that Fnatic have taken A main, they probably have it for the rest of the round. So they can leave, and Loud will probably never have great information about whether or not Fnatic could re-hit A. I like how Boaster's playing this one. But you've got to remember, Fnatic is still a fairly gun disadvantage here. उन्होंने सारा प्रेशर ये देकर खुद भी निकल गए Down to any of those duels, any of those gunfights. स्मोक देने लगा ये फिर Just farm up the orbs, take control of main, make sure that they can build छोड़ up these दिया ultimates मिड जा for रहे a future हैं battle. मार्केट But they're going to be a little bit ये यार इको इतना लंबा कर रहे हैं अजीब बंदे हैं आज जाके मरोगे ना करो Mimi on the desk was talking about it when it came to their fracturing. Lambord लगा ये पीछे almost there. Triggers. No play off of it, but it's just that spam. It's going to be an ace split. He's leaning towards it, but they've got to deal with Sadak. Dart at his back still, he's cool, calm. शॉट से उधर जा Moving to util. They're running out of time. This could be a disaster. पिछाव लगा लाउड का एक बंदा मारता क्राउड के आवाज सुना कर पीछे से Overcooking this one. Nice. Can't be saving these Nice. pistols, not into this round. And Sadak will answer kindly. कमबैक है लाउड का तो मैं बता रहा हूँ ये राउंड ले लिए गेम ले लिए पहला था ले लिए कमबैक है लाउड का कमबैक है मेरा आया Very clean round from Loud. Prime game and flawless. Puts them into a position to start this comeback. And they got some kind of bonus round cooking here. Hello, it's not like Sadak was able to build up to his ultimate there, even with the eco kills towards the end. Hello, how are you? So there's nothing major to craft the game plan around. Good. Okay, we're back to the A Viper wall. Favoring it a lot more than they did against the What's up, bro? RS. Possibly just worried about doing their homework. So this lineup from Chronicle is going to clear out Wine really heavily. And what I noticed watching the Fnatic attack is that they are so lineup reliant. All of the players have lineups for everything. But it means that they start their executes a long way away from the site. And that gives the defenders just a brief extra moment to react. Drawing through a timing. The potential is there for Boaster. Looks like he might want to go for this one, but no. Viper wall in his face, pushes him back. Jump spotting from 2 years. अबे आसपास देख कितना गन एंगल होल्ड करके बैठा हुआ है हां बहुत मुश्किल है उधर तो फ्लैश हो गई पीक में फ्लैश डॉज भी तो अच्छा करता है यार पैर ना करके ना यहां पे अगर पैर ना करके बूस्टर अंदर बढ़ता है कसम में 2 बंदे ले जाता है और ना फ्लैश डॉज जाता है ओए रन देख उसका जेट का ले गया क्रॉनिकल वो ले गया ओए आसपास की बेटा तुन्नी में दिबा फेरा वो ले गया बूस्टर अंदर निकल गया पर एक उधर ही है उसको चढ़ जाएंगे देखिए उस पे चढ़ जाएंगे नहीं चढ़ते नहीं ओह उसका
का देख नहीं यार, उसने एम पे लॉस किया, हक दिया। बहुत आला ले गए राउंड। लेकिन उन्होंने बोनस भी इतना अच्छा खेला, उनकी 3 गने गिरा दी उन्होंने, और क्या चाहिए। आसपास वो ओप जाने लगा, लेट्स गो ओप आ गया, ओप आ गया। ये राउंड इनका नहीं, ये राउंड इनका था, ये राउंड ना इनका था लाउड का। क्यों? क्योंकि देख जो उसने वो उस पे लिया ना आसपास, लाइक जब उसने बूस्टर ने पीक लिया है तो आसपास ने एक गोली भी चलाई, वो रन करता है बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया, वहां पे बूस्टर ले जाते ना ये। हां तो बूस्टर ने अंदर जाके 2 मारे हैं फिर। हां वो टीपी करके स्मोक करके निकल गया वहां। It means that when they come into rounds like this, even though it was a decent तू देख अगर पीक हो जाती है ओमन की उधर, that is a big push. ओले आ गया, ओले कमबैक आ रहा है। Right to win that one. Could barely rattle off any bullets, yet still he does. अबे सादक पागल है, कुछ नहीं करना चाहिए। Massive opener. Kawanzine using one of his flashes and peeking behind it to clear tiles. Sky ने इसलिए पुश किया, वो 1 HP का 4v4 फाइट हो गया, लेकिन वो देख फुल भाग गया वहां because of all of this information that Kawanzine is getting. But at some point he may overstep. I mean, look at these players from Cat. They're going to see it. अबे डर का ले गया। Overstaying is welcome in tiles. Kawanzine, he did get good information, but ये राउंड चला गया ना, लाउड हार जाएगी, उनका फुल बाय है ओप के साथ, ठीक है, और ये राउंड चला जाना। वो ले गया ना, ले गए बढ़ के। बी कोई भी नहीं है, वो तीनों ये स्टैक कर रहे हैं, बी कोई भी नहीं है। अब वो सेव कर लेंगे लाउड। Especially with Sadok's wall committed on the opposite side and the IGL himself. हां सेव कर देंगे in the spawn queue. यार बोस्टर बहुत प्यारा आईजीएल है यार। लियो नहीं आईजीएल, अबे बोस्टर है आईजीएल। लियो है ब्रो। नहीं बोस्टर ही लियो ही। Not having a great game himself. 5 and 12 currently. कौन सा नशा किया तूने? लियो ही आईजीएल। Fight with the Spectre. Just dancing around, not willing to really fight anybody on even footing. Of course with the inferior weapon, but I normally expect Aspas to be more confident and aggressive than that, brimming with it. And now in this round, मुझे लगता है जो बंदा आईजीएल करता है ना उसको उसकी गेम में इफेक्ट बहुत पड़ता है। हां ना, मुझे तो हमको देख लिया कर, क्योंकि लाइक वो मिनिमम देखता रहता है, पूरा दिमाग देखता रहता है, उसकी गेम अपनी खुद खत्म हो जाती है। हां मुझसे खुद आईजीएल नहीं होती, सीधा अपनी गेम करो बस। यार raw skill. It's been a clear difference maker, as we've been mentioning before. Fnatic seems like they broke barely a sweat at times. Listen, don't get me wrong, pushed here and there on a map or two, but not dropping a single one to make their way all the way. वो जो डरका की पीक हो गई है ना वहां से, वो भी इनको क्योंकि बी खाली होना था, वहां से 2 बंदे पुश कर आ गए थे। तुझे पता है जिन्होंने हेडफोन पहने होते हैं ना, ये सारे नॉइस कैंसिलेशन आ जाते हैं, अंदर हैंड फ्री लगे थे, अंदर हैंड फ्री उन्होंने वो उनके हेडफोन्स होते हैं, वरना क्राउड की आवाज इतनी होती है, वो फिर गेम का होती है। ये आसपास पड़ा है। अबे यार ये एंगल होल्ड करना बेवकूफी है। कौन सा? ये क्योंकि लाइक कोई भी टीम यहाँ पे पुश नहीं करती, कर दे कभी कोई कर भी देते। अबे नहीं करती कोई भी बड़ी टीम इस तरह पुश कभी भी नहीं करेगी इन एंगल्स को। आप ऑपर अगर आप अच्छे हो हमेशा ऑन साइड ऑप करोगे, ना मिड ऑप करो ना क्लोज ऑप करो। हां वो डिफरेंट एंगल बनाने पड़ते हैं। अब ये देख ये एंगल अच्छा है आसपास के लिए। हां वो क्रॉस अप करेगा बी की तरफ, नहीं उसने देख लिया बोर्ड मारा ना, वो होल्ड करके बैठ गया। वोमन है ना वो, लेकिन उधर फ्लिक मारना बहुत मुश्किल होगी, 20 10 से ठीक दी है ना, अगर डैश चला गया तो मर जाएगा। उसने रामी है बेटा। To block off some sort of angle. This looks like it's going to be a B hit here. ओए तू पीछे कर अपनी गेम, मजा खराब कर रहा है मेरा सारा। All up to these players in B main. In that 4v5. Seekers instant. अबे नाइस लड़के। जुर्को को चेक कर यार, वोल्ट बैंग। अबे ले जाएगा डर का ये। अब यहाँ पे मेजर चीज ये आसपास नहीं, आसपास को निकालना पड़ेगा, बाकी वो निकाल जाएगा एक भी। स्काई क्या Yeah, but here's where we get to see the Viper wall. वो एक बंदा लड़ पे होगा, वो देख केजे, to still support each other. केजे को देख, केजे को देख, लो वो आया देखने, वो देख ले उसने, नाइस। अबे तू साथ किसके है, कौन सी टीम के साथ है दल्ले? यार मैं यार मतलब देखो लियो ले जाएगा, लियो ले जा यार, फिर आगे पीछे
Just absolutely bunkered. Time running low. Spike. Oh, ले गया loud. Barely any time left to play with. What is that? Sadak making the most. Leo, how do you hold on? 33 health, but he's done enough. Oh, जीत The गए. players allowed, trying to vacate, trying to save their weapons. They will do Viper just की flip देखी थी तूने? Purely consolation, Josh. It's Fnatic who win the round. आसपास गई हो. दूसरा टाइम आउट. दूसरा टाइम आउट. 11-6. दो टाइम आउट होते हैं. हाँ दो होते हैं वही मैं तुझे बोल रहा हूँ. वो देख Fnatic ने दोनों अपने ले लिए टाइम आउट. ये 3 जो है ये मैच है शायद. 3 डॉट जो है ना वो मैच है. हार गया यार ये लाउड. does so well in this round too. Once he gets spotted in mid, because it burns so much time off the clock, and it was Loud's biggest enemy. तू भी रोने वाला हुआ. ये मुझे पता है Fnatic ने जीतना मंत्र बोला आते ही बोला. And then not quite able to hold on to the site. 30 सेकंड में क्या गपशप हो जाती है. बहुत बात हो गई. Into more positions where he can control the map. ये नहीं होता. होता है कि ना इनको इनके पास ना कुछ गेम स्टाइल्स होते हैं बेसिकली. एग्रेसिव हो गया, डिफेंसिव हो गया, डू दिस डू दैट. तो दे जस्ट टेल यू ओके. वो भी होता है माइंड बड़ा यहाँ पे रुक जाता है. वो बंदा जो अग्रेसिव होने की करता है ना हार के रहा. प्रोफेशनल है. क्या नाम है तेरे वुल्फी? ये प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं ना. इनके पास बहुत ज़्यादा वो होता है. मतलब ऐसा नहीं होता तू एक प्लान पे गेम ही खेलेगा. लाइक देयर मस्ट हैव बीन वे टू मच आइडियाज देयर. Should have been the favorites in that. टाइम आउट में कोच से बात कर सकते हैं ना ये जो करते हैं. हाँ कोच ही तो बोलता है. वो बताते हैं कि what are you feeling, what do you think we should do next, which strategy we should adapt. Hopes and dreams of trying to grab that back-to-back title to lift the trophy once more in front of that hometown. सही बना हुआ है क्यों? Fnatic are going to be joyous though. This is a great lead for them. उससे नाइफ से वो बनाया हुआ है क्या? For the back, Kawazine, no chance of him using any util. This is fast. Okay, Fnatic. Not wasting any time. Moving forward. How do you maneuver your way around this one? Still 2 players anchoring it to the back. So Loud, comfortable for now. Still, hot flash play, and there's the response. Chronicle there. Fearless from Boaster. 7-8 fight anyway. Nice shot. Making it easy for them. Leo का कोई पता भी नहीं है वैसे. Leo बहुत पता है. हाँ Leo का कुछ पता भी नहीं है. Whatever timeout Loud has taken, paying dividends. Check कर Leo का. In these situations, it's a very difficult one to win, but you can see that he's happy to be patient, disciplined. See if Loud are gonna make any mistakes and give him a free one. से गया देख उधर है. नाइस. हो सकता है क्लैश. जितना वो प्यारा खेल रहा है ना तो गलत कर दिया. अबे आसपास बहुत गलत चला गया. ये जितना प्यारा लियो खेल रहा है ना केजे को लेकर राउंडिंग का निकलेगा. ओह नाइस. ये क्यों हो रहा है केजे ने? नजर ही नहीं आई तुझे पता? बहुत अच्छा शॉट. नहीं कि वो के जेट सही गया था. वो मिड से B8 आ सकता था. वो उसने मिड होल्ड किया अपनी तरफ से. अच्छा गया आसपास सही था. नहीं अबे स्पाइक ही उधर पड़ा हुआ था. स्पाइक उन्होंने छोड़ा हुआ था ना तो देख ले केजी पे अंदर जाके बैठी थी. स्पाइक उधर था. कोई ना तो आसपास वही एंगल होल्ड करना था ना. यहाँ तो डीप उधर से डीप बैक होल्ड कर वीकॉन हो गया था ना तब आसपास पीछे हो गया था. उसके बाद ऑफ थे. अगर वो मुंह से पीक रहा था ऑफ से कैसे मारता आसपास तू देखना. अबे स्पाइक उनके पास. मेरे अगर उसके पास स्पाइक होता तब वो मूव अच्छी थी. लाइक आसपास डिफेंसिव चला गया था ना. 0 रिस्क के चला गया था. मेरा पॉइंट ये था कि अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेता तो पहले वो खुद ही मारता. देख ले केजी पकड़ लेंगे केजे. गई है केजे. पीक ही नहीं करेगी वो देख स्मोक देख. कॉल चेक कर रहा तू और स्मोक देख. Free to cross. Now you start to see that Viper's pit. We were talking about this earlier. सालम यार देख. ए छोड़ा हुआ उन्होंने बस. ए से उधर से एंट्री हो सकती है बस. But at the same time, Fnatic could group up and go for an A pop or a B pop. ये देख रहा है इसने सोवा से देख वो क्लियर करा लिया कि वो ऑफ कर रहा है. इन्होंने ये चीज नहीं की थी तब अपनी बारी. अबे चैट की बेचारी क्या करे.
चैट बेचारी क्या करे? Hunter's Fury leads the charge, leads them in. Jumping, skipping straight past an लियो ओए ये क्या कर दिया इसने? So much damage and wow. Aspas trying to avoid it. किल जो कि अल से वही एंगल बचता था उसने वहीं पे अल्ट मार दिया। तो चेक कर यार, ये ऐसे नहीं बनती चीजें, ये ऐसे नहीं बनती चीजें। सबको बता दिया। They have a flash, but do they decide to put it in that place? No, doesn't quite catch him. Nice. ये एंगल 100% चेक करता है जिधर बैठा है ना बूस्ट। He does, runs out, no trade Nice. inside, still less is there, and Leo's made it dangerous. 1v2. But down to Chronicle. अबे ओमन पीछे देख ले, ओमन पीछे देख ले। Time has been bought, no utility. Back of the side cleared, finds an easy fight, down to 2 years, and this is so dangerous. Has to stop the percentage play, but the running gun forwards, and Fnatic find themselves on that map point. तुझे पता है अगर वो स्पैम करता ना, उसने स्पैम इसलिए नहीं किया, स्पैम करता वो पीक के दे के मार सकता है। The amount of pressure that Fnatic are under and still able to generate these rounds is वो देख जेट को कैसे First मारा। of all, great ult combo there, right? Baiting यार Aspas into the मेन corner, चीज ही जेट को knowing that they मारना। left the gap and punishing. Love to see that. तू देख जेट ने क्लोज एंगल पकड़ा है, उन्होंने सोवा से इजी उसे पकड़ा है, फिर पीछे आके वहां से भी पकड़ लिया। उन्होंने एम पे बात आनी नहीं दी जेट पे। उनकी कौन भी हारेगा। ओए 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 ओए। With a massive ditch to dig themselves out of. अग्रेस हो गया। ओ फैंस Overstays as well. कुछ ज़्यादा ही अग्रेस हो गया भाई। पर वो Still Leo, God, man, this guy's util. लियो भी फुल अग्रेस। He almost got 2. अगर ये साइड लेंगे तो जीत जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। Moving forwards, Boaster, that's a TP close. There's a lot of it. It's all going to be close उनके now पास as well. इतनी So the side utility नहीं है, give it up, चीज़ but Cloud technical is tools so वाला fast चाहिए। to play, and it has to be a win. What is the plan here from Fnatic to counter the lockdown? They must have known that it was available in the round, but they didn't have anybody backstabbing towards Catwalk. इधर नेट क्यों नहीं करी क्या? वो फौरन तोड़ देते हैं ना। The foresight quite. It's given Loud this opening. आधा होगी। Being diffused, half on it already. If your plan is to spam, it's वो not a तो particularly लेगी। good one. Oh no! Still, he gets taken down. Flank as well coming through. कर जा डिफ्यूज इट। Let's go. Nice round यार। अबे लेकिन उनकी इकोनॉमी भी मारे गया। सारे मार गए। फुल बाय किया था ना उन्होंने, लास्ट राउंड था उनकी तरफ से। And that is a classic Loud retake. Very aggressive, leave one player on the यार जो पिछला राउंड गया है ना, वो ना जाता ना, बड़ा मजे का मैच चल जाता यार। to get the other half. बूस्टर बहुत brutal. Everybody on Loud falls. Their economy यार is तू in देखियो no better खुद spot. स्मोक करके उसमें स्पैम कर लेते हैं, हम तो इधर डिफेंड के लिए स्मोक करते हैं स्पाइक के। Point on the board. Steal one round away स्पैम देख। from Fnatic, who has sat still. तूने असुना के डिफ्यूज देखे थे? With 4 आइसबॉक्स में। future rounds, future बहुत opportunities. प्यारे to उसने convert. स्टिक डिफ्यूज किया। No room for error. That's what Loud are dealing with. But for Fnatic too, they can't अभी rush डरका ने कितनी गलत That round was sloppy. Durka just looked like he wanted it वो जो over. पहले हाँ अग्रेस चला गया। He was ready, already नहीं thinking ये वाली about भी fracture. गलत है। यार वो इसलिए अग्रेस गया है क्योंकि जब लास्ट राउंड थे ना, लास्ट राउंड तो उनका बाय भी नहीं था, उन्होंने कहा हम अग्रेस जाते हैं, बट वो हुआ नहीं। वो जो मुंह पे डैश मार के गया ना, वो गलत काम किया जेट ने। Covers in jump speed, jump Yeah, he spotting होता है as ना, well. like Getting that you know, like you information have in the the mid-round. confidence. Okay, Now, why do I get the feeling we're about to see something silly from Boaster? He's picked up the ult orb to get his Omen ult online, and the spike's headed in the opposite direction. Is this just him controlling a main and applying some pressure and meeting back up with the rest of his team? ये वो उनका बी रीटे कितना प्यारा निकल रहा है। Doesn't have the gun for the job, does he? Spectre. Barely even a tickle, no damage done. But backs away now. A पर double smoke करके on the rest of his team. TP. A वाड़ गया। There's that ult that he picked up. Dash forwards, cutting it across. It's a वो बहुत प्यारी जगह गया हुआ बूस्टर। Fnatic turning the arena into a library, but Loud have got to do the most now to try and upset that. Knives in Aspas's hand. What is the Q he's waiting for? Dashing to the side, spots a player, pings it out. One kill found, still got the knives. An upgrade in the weapon. Les has cleared out B main as well. It's a 2v3. Make it a 1v3. Aspas just nigh impossible to keep them in the map. Nice. Stationary ground still held down. That 13th round is claimed. Fnatic off to a fantastic lead. क्या हो गया?
First blood in the series for the EMEA Super Team. Showcasing here in Sao Paulo that home territory means nothing. Home ground advantage.